Okay, let's begin. So a very warm welcome to everyone to today's webinar where we'll be discussing curriculum textbooks and the rise of mandated religion in our education system. I'm Anya Niaz and I'm an education researcher and advisor, and it's an absolute pleasure to be moderating today's session. This webinar today is actually being hosted by a consortium of organizations that are working on inclusive education in Pakistan. So the People's Commission for Minorities' Rights, the Center for Social Justice, Pakistan Minorities Teachers Association, the Cecil and Idris Chaudhry Foundation, the National Commission for Justice and Peace, and of course the Idara Talim-o Agahi. The panel today needs no introduction, but for those that may not be familiar, I'd like to begin with Mr. Peter Jacob, who is the Executive Director of the Center for Social Justice and Peace. He is also a member of the National Curriculum Council as well as the Inclusive Education Group. Next, we have Dr. Pervez Hoodbhai, who is a professor of physics at FC College in Lahore. He's edited Education and the State, 50 Years of Pakistan, and he's an author, a columnist, a social activist, and a former advisor to the UN Secretary General. Next, I'd like to introduce Dr. Riaz Sheikh. He is the Dean of the Faculty of Social Science and Education at Zabist in Karachi. And his areas of research and interest include religious extremism and civil-military relations. We have on the panel with us as well Bela Jamil. She is, of course, the CEO of Idara Talim-o Agahi, which leads nationwide flagship initiatives on citizen-led assessments, on the Literature Festival, accelerated programs for girls and women, and she is representing Pakistan in many prestigious global and regional forums. We have dear Zubaida Mustafa. She is a seasoned journalist, in fact, the first woman who began to work for Dawn, a mainstream media group, in 1975. She's an author of several books and is deeply committed to gender and inclusion and human rights. We also have amongst us Dr. Fareed Panjwani. He is the Associate Professor in Education and Religion at the Institute of Education of the University College of London, and he is also the founding director of the Center for the Study of Education in Muslim Contexts. We also have amongst us Dr. Nair. He is a physicist who has retired after teaching at the Quaid-e-Azam University for over 30 years, and he's been very keenly following developments in school curricula as well as textbooks. Last but not least, we have Kamila Chaudhry. Kamila is currently a PhD candidate at the Faculty of Education at Cambridge University, and she will be leading the Q&A at the end, as well as curating the questions as they come through the course of this webinar. Now, before we actually begin, a few quick housekeeping items. We would love for you all to engage with one another using the chat box. If you have any specific questions you'd like the panel to address, please make sure you post them in the Q&A box that Pamela will be keeping an eye on. We're conscious that we don't have very much time, so we'll endeavor to respond to as many as possible. Otherwise, we request that you can send your questions to Mr. Peter Jacob, and we'll provide his email in the chat box so that later on he may be able to respond to your queries. And now, without further ado, I'd like to begin. Whilst the single national curriculum, which has been crafted by the federal and provincial governments in Pakistan, is much awaited, it appears that the government of Punjab has been actively engaged in the month of June to enhance the scope of teaching of religion in our education system. This webinar is actually organized as a response to these recent developments regarding the rise of mandated religion and religious content in schools, in textbooks, in universities, as well as the pedagogy of teaching. It appears that there has been legislation and ordinances that have been passed without much public debate or participation. And in fact, we can see that since 2018, the legal landscape in Pakistan has been ripe with the implementation of religion. A few examples of recent legislations include, number one, the Punjab Compulsory Teaching of the Holy Quran Act of 2018, in which students in public schools across the country have to, across Punjab, have to
recite the Quran from grades 1 to 5, followed by reading the translations from grade 6 onwards. We also, more recently this year, we have the Governor of Punjab's notification that came out June 4th that made the awarding of degrees across all public universities conditional on passing an exam on the reading of the Quran with translation. We also have the Punjab Curriculum and Textbook Act of 2015. However, it actually has gone through receiving an amendment, Section 2A, which requires that all subject textbooks must be approved by the Muttahida Ulama Board before they're used in schools. Earlier, in fact, the research I found that they had the right to pose revisions. However, at this point, nothing can be published unless they've reviewed it. We also are aware that there is the new Islamiyat curriculum as part of the single national curriculum that's coming. However, we also know that it's advertised for textbooks already, so there may not be enough wiggle room for revisions that it might deserve. With that, I'll stop speaking. I know I can go on for hours on this topic, but I'd like to actually begin the discussion. The discussion will be organized into 3 sections. We'll start by painting an as-is picture to understand the current legislation. We'll continue by analyzing and discussing the implications across the education system. And we'll close by looking at ways ahead. So when we look forward, what are some actionable steps we can take that might enable us to have a healthier relationship with the inclusion of education? With that, I'd like to turn to section number 1. I'm just conscious that Maimuna has not joined us yet. That's no problem. Great. Okay. So just with question number 1, actually, Belaji, if I can quickly ask you, since Maimuna is not here yet, what has been, to your knowledge, what has been the thinking behind the passing of such legislation in Punjab, especially in 2020? Belaji, can you hear us? Oh, yes. Okay, please. Well, I just want to mention that I did speak to the MPA PMLQ Khatija Umar, who had tabled this bill, and she explained to me that there have been at various points problems of textbooks which have come on the market and are being used in schools where there is lots of problems, or the religion or text religion from Islam are not quoted right, or they're inappropriate texts which are there, which lead to lots of issues, including challenges of 295C. And she said this way, we felt that it would protect the way the textbooks are written up, and there would be a body to address this, this challenge. The section 2A of Article 10 of the Punjab Curriculum Textbook Board Authority, which says any textbook or curriculum on religion with contents or matter related to Islam, including Islamiyat, history, Pakistan studies, Urdu, literature, or any other subject material related to religion shall not be published before taking prior approval from the Muttahida Ulama Board, Punjab, and the PCTB shall be bound to take such approval from Muttahida Ulama Board, Punjab. Now, this particular section 2A was passed unanimously and very fast. There wasn't much public debate, and as we speak now, and actually our colleague from PCTB was just having problems getting in. She will, I think there's a problem for her. She can hear us, but she cannot, for some reason, be able to speak. But when I spoke to the PCTB directors, they said that for them this was news too, because they had not been, this had not been discussed with them.
مگر اب ان کے ساتھ ان کے پاس یہ آیا ہے فار کامنٹس, اور چونکہ یہ آلریڈی کامنٹس کے لیے اب آ گیا ہے, تو وہاں پہ جو پی سی ٹی بی کے ایم ڈی ہیں انہوں نے ایک کمیٹی بٹھائی ہے تاکہ وہ اس پرٹیکولر سیکشن کو ریویو کریں, اور اس سیکشن کی امپلیکیشن کیا ہے, اس کی آپریشنلائزیشن میں, مطلب ہر مسودہ یا مینوسکرپٹ آئے گا اور پھر وہ کیسے جائے گا, اور مطلب اس کی روٹنگ کیا ہوگی, کیا یہ نیشنل کریکولم جو آ رہا ہے سنگل نیشنل کریکولم, اور اس کے لیے جو ٹیکسٹ بکس آئیں گی کیا اس میں بہت ڈیلیز ہو جائیں گی, کیا ہوگا, مطلب بہت سارے ایشوز ہیں. تو انشاءاللہ آئی تھنک وہ 5-10 منٹ میں شاید وہ آ ہی جائیں, تو جیسے ہی آئیں گی آپ ضرور ان سے پوچھ لیجیے گا. مگر ظاہر ہے کنسرنز کافی ہیں کہ کیا یہ ہر کتاب اور ہر سبجیکٹ جب اس طرح سے کریکولم ٹیکسٹ بک بورڈ بھیجے گا متحدہ علماء بورڈ کو, تو اس میں کیا ڈیلیز ہوں گی یا بہت فاسٹ ٹریک پہ کام ہوگا, یہ کیسی اسمبلی لائن ہوگی, اس کے بارے میں بہت زیادہ انفارمیشن نہیں ہے. اور جیسے بہت سارے دوستوں کا کنسرن ہے کہ اس پہ کوئی بحث نہیں ہوئی, کوئی ایسی ڈبیٹ نہیں ہوئی, کوئی سب کے سامنے نہیں آیا. جب ایک اتنا بڑا بیڑا حکومت نے سنبھالا ہے کہ ایک سنگل نیشنل کریکولم ہو, تو اور اس کے بارے میں بھی زیادہ پتہ ہونا چاہیے, تو ضروری ہے کہ it's important to see how we can have a debate on how we can how people will be able to engage with this particular article, and what are the implications for either delays in textbooks, and what are the implications for making it exclusionary to those communities who do not really who are not from the religion of Islam. So those are all genuine concerns, and if you don't mind we can speak in both Urdu and English, کیونکہ کچھ participants ہمارے اردو چاہ رہے ہیں اور کچھ انگریزی چاہ رہے ہیں, but essentially this is really one crux of the matter. Of course then the issue of the universities as well. Absolutely. Thank you, Belaji. And we're going to unpack some of the points that Belaji has mentioned. As we wait for Maimoona to join us, Dr. Nair, I'd like to turn to you to ask you, what are your views on the single national curriculum? Do you think it will bring madrasa education into the mainstream as claimed by the Prime Minister? Thank you. This is something where, we see all the various things that go into this. میں آپ کو بتاؤں کہ مدرسہ کو اس مین اسٹریم کرنے کی جو ان کی کوشش ہے. Ania Maimoona has joined. Yes. تو میں یہاں روک لوں یہاں پہ میمونہ کی بات کرنے. اچھا ہوگا اگر میمونہ کچھ بات کر لے. جی پہلے ان سے. Thank you, Dr. Nair. Maimoona, just for everyone, Maimoona ji has joined us. She is the Deputy Director of Curriculum at the Punjab Curriculum and Textbook Board. Welcome, Maimoona ji. If I might just inform, Justice Nasira is also trying to join. Okay. And please let her in, and finally she might also contribute on the legal aspect of the issue. Absolutely, sounds good, no problem. Thank you, Mr. Jacob. Maimoona ji, our first question is actually around, it's posed to you. It's what has been the thinking behind and the envisioned impact of the recent legislation and amendments, such as the Punjab Curriculum and Textbook Acts Amendment that requires all textbooks to be reviewed and approved by the ulama. We'd love to hear your thinking as well as to understand what has been the planned impact of this. Thank you so much. I'm really honored to be here with such an esteemed panel. Basically, to be honest, I was just, first of all, so regrets to be delayed, but I can watch and hear everyone, but I was not going to join, so that's why a bit late. So as Ms. Bella was sharing that during the legislation that was approved, usme koi as such proper discussions nahi ho saki.
Even our Minister of Education, Dr. Murad Ras, was there. Even he could not participate or say anything in the assembly. So it is like a proper discussion was required at this sensitive topic and sensitive issue before finalization. But the draft is further for the further discussion and for the further उसमें वो के वो law तक to हो चुका है, amendment has been done और assembly के accordingly as per government orders we have to go along with that, we have to honor it. बट उसमें थोड़ा सा ये है कि उलमा बोर्ड की तरफ अगर हम जाएं तो वहाँ पे भी यू नो कि जिस तरह के सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट रिक्वायर्ड होते हैं, जैसे पीसीटीबी में सब शामिल हैं, दैट डॉक्टरेट हैं, फिल्स हैं, मास्टर्स हैं, प्रॉपर विद प्रॉपर एक्सपीरियंस दे आर देयर. बट इन उलमा बोर्ड आई थिंक मतलब दे आर लाइक उसमें उस तरीके से हम स्पेशलाइजेशंस को फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं. और द थर्ड थिंग इज कि इसमें फर्दर काम करने की भी ज़रूरत है और उसको मतलब रीजंस बिहाइंड यू कैन से कि फ्यू फ्रॉम कुछ अरसे से ऐसा हो रहा था कि फ्यू थिंग्स वर कमिंग इन द टेक्स्ट बुक्स और डिफरेंट बुक्स दैट वर पब्लिश्ड बाय द प्राइवेट सेक्टर्स, प्राइवेट पब्लिशर्स. सो उसमें कुछ इश्यूज ऐसे रेस हो रहे थे जो कहना चाहिए कि रिलीजन्स के या इस्लाम के थोड़ा सा अगेंस्ट आ रहे थे, जिस पे इमीडिएटली ये बिल यू कैन से कि इसको अप्रूव कर दिया गया. बट इसमें जो फर्दर ये है कि नॉट एवरी सब्जेक्ट या हर बुक उसमें उलमा बोर्ड के पास नहीं जाएगी. एज पर सेक्शन या अमेंडमेंट के तहत जो रिलेटेड बुक्स हैं, दैट इज लाइक इस्लामियातों का हिस्ट्री, सोशल स्टडीज, जिसमें आपके इस्लाम से रिलेटेड या रिलीजन से रिलेटेड कोई बात हो सकती है, दे विल बी सेंट. अगर फाइनल हो जाता है ये सारा फर्दर discussions के बाद then those books only sent to the ulma board, not like math या sciences की books हैं वो उसमें नहीं जाएंगी. Secondly उसमें जो further और बात है कि उसमें भी फिर वेरी करता है कि किस लेवल की और किस तरीके से किस प्रोसीजर के लिए फर्दर SOPs अभी बनाने बाकी हैं, प्रोसीजर अभी बनाना बाकी है, फर्दर कमेटीज अभी उसमें बनेगी, ताकि ये नहीं कि अभी हो गया अभी फर्दर उसके प्रोसीजर्स SOP वो सारी चीजें अभी उसमें बननी है, दैट इज रिक्वायर्ड. और इसमें थोड़ा सा हमें अभी मतलब कोशिश तो है कि दैट हमारी जो टेक्स्ट बुक्स हैं जो न्यू हमारी 21st सेंचुरी के लिए बुक्स 21st जनरेशंस के लिए जाना है जो मटेरियल, उसमें थोड़ा सा जो रिलीजन आप कह रहे हैं लिटरेसी के रेफरेंस से हमें बहुत ज़्यादा उनको एक उस एंड पे भी लेके जाना है. दे हैव टू प्रोग्रेस, दे हैव टू गो फॉर ब्राइट फ्यूचर्स एज वेल. सो ये सारे फैक्टर्स हम कंसिडर कर रहे हैं और उसके अकॉर्डिंगली आगे फर्दर SOPs भी बनेंगे, उनके TORs भी डेवलप होंगे, एंड देन वी कैन मूव फर्दर फॉर दिस अमेंडमेंट. Thank you, Maimuna ji. I'm sure there'll be some specific follow-up questions as they come up, but we'll get to them in due time. Keeping the legislation in mind, we can now come back to you, Dr. Nair, to understand the plans for the single national curriculum and what your thinking is on them, and the further inclusion of the madrasa type of education in our mainstream schools. ये बात तो थी कि जब सिंगल नेशनल करिकुलम से पहले जो आइडिया था यूनिफॉर्म एजुकेशन होनी चाहिए, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन स्लोगन था. और इसके अंदर उनके नज़दीक जो सबसे बड़ी बात थी वो ये थी कि अपार्थाइड है और इस अपार्थाइड के अंदर एक साइड के ऊपर मदरसा है जिनके लोगों को कोई जॉब नहीं मिलती, जिनके पास कोई आगे बढ़ने के प्रॉस्पेक्ट्स नहीं है. दूसरे एक्सट्रीम के ऊपर प्राइवेट स्कूल्स हैं जिनके लोगों के सामने जॉब्स हैं और अपॉर्चुनिटीज़ ही अपॉर्चुनिटीज़ हैं. और दरमियान में पब्लिक स्कूल्स हैं जहाँ पे लोग मेहनत करके चले जाते हैं, लेकिन अक्सर लोगों को बहुत बड़ा हैंडीकैप हो जाता है उस एजुकेशन की वजह से. तो उन्होंने कहा कि ये इस वजह से हम चाहते हैं कि यूनिफॉर्म हो ताकि सबको बराबर के मौके मिले. इसमें बुनियादी तौर पे इसमें उनका ख्याल ये था कि जो मदरसा एजुकेशन है स्पेल्ड आउट, उन्होंने कहा कि जो मदरसा एजुकेशन है उसके अंदर जो कंटेम्प्रेरी कोर्सेज हैं वो नहीं होते, पढ़ाए जाते वहाँ पे. मेरा ख्याल में वो उनका बुनियादी प्रेमिस ही गलत था, क्योंकि उन्होंने देखा ही नहीं था कि मदरसों में तमाम किस्म के मदरसों में जितने भी हमारे पास चलते हैं पाकिस्तान में 5 वफाक हैं, एक जो है सरकारी भी है, उन तमाम के अंदर हर मदरसे के करिकुलम के अंदर पब्लिक स्कूल्स के अंदर या जो सरकारी प्रिस्क्राइब्ड करिकुलम है उसके कोर्सेज भी चलते हैं. उर्दू, अंग्रेजी, माशरती उलूम,
حساب وغیرہ وغیرہ سب چلتے ہیں اس کے اندر, سب پڑھائے جاتے ہیں اور ان سب کے امتحان بھی ہوتے ہیں. تو لہٰذا یہ پورا ان کا پریمیز ہی غلط تھا. اس وجہ سے ہوا کیا کہ جب انہوں نے کہا کہ اچھا آپ لوگوں کو مدرسے والے آپ لوگوں کو یہ پڑھانا پڑے گا, تو انہوں نے کہا خوشی سے ہم پڑھا دیں گے جی, کیونکہ وہ تو پہلے سے ہی پڑھا رہے تھے. اس وجہ سے کوئی بڑی بات نہیں تھی. نقصان کیا ہوا؟ نقصان یہ ہوا کہ چاہتے تھے کہ مدرسوں کو مین اسٹریم ایجوکیشن کی طرف لایا جائے. ہوا یہ ہے کہ جو مین اسٹریم ایجوکیشن ہے اس کے اوپر بہت سی مدرسہ والا کریکلم اس کے اوپر ڈھول دیا گیا. I was surprised to see single national curriculum کہ کس انداز میں انہوں نے اس کے اندر بہت بڑی رفتار کے اندر مدرسہ کریکلم کی چیزیں ایڈ کر دی ہے. اور ابھی تک تو صرف پہلی سے پانچویں تک آیا ہے. جب چھٹی سے 12ویں اور 14ویں تک آئے گا تو اس وقت ہم دیکھیں گے تو ہمیں اور اندازہ ہوگا کہ انہوں نے کون سی چیزیں ایڈ کی ہیں. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں, میرے پاس اس وقت ٹرانسپیرنسیز رکھی ہیں, اگر موقع ملا تو میں دکھاؤں گا کہ جو پہلی سے پانچویں تک کا کورس ہے مدرسوں کے اندر, چاہے وہ تنظیم المدارس کا ہو بریلویوں کا, چاہے وہ ان کا ہو رابطۃ المدارس ہو جماعت اسلامی کا وغیرہ وغیرہ, اس کے اندر جتنا کورس دیا ہوا ہے اس کا ایک چھوٹا سا حصہ اسلامیات ہے. اور وہ اسلامیات کا چھوٹا سا حصہ جو ہے وہ ہم نے یہاں پاکستان گورنمنٹ نے جو اب بنایا ہے اسلامیات کا کریکلم جو پہلی سے پانچویں جماعت کے واسطے, اس کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے. اتنا بڑا حصہ انہوں نے بنا دیا ہے, بہت سے ٹاپکس اس میں ایڈ کر دیے ہیں. ایک بہت ہی ہیوی لوڈ اسلامیات کا انہوں نے کیا ہے. نیا اسلامیات کا کورس پرانے اسلامیات کے کورس سے بھی نہ صرف زیادہ ہے, بلکہ جو مدرسوں کے اندر مدرسوں کے اندر جو اسلامیات کے پڑھائی جاتی ہے اس سے بھی زیادہ ہے. وہاں پہ وہی پہلی پانچویں جماعتوں میں تمام قرآن شریف کا نازلہ پڑھا جاتا ہے. نئے نیو یہ جو SNC جو ہے اس کے اندر بھی سنگل نیشنل کریکلم, اس کے اندر بھی وہی ہوتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ سنگل نیشنل کریکلم کے اندر احادیث شامل ہیں کہ جن کو عربی میں یاد کرنا ہے, ان کا ٹرانسلیشن یاد کرنا ہے. اور احادیث جو ہے وہ پہلی جماعت سے ہی شروع ہو جاتی ہے, اور پہلی جماعت سے لے کے پانچویں تک یہ احادیث جتنے مدارس ہیں, مدارس میں کسی مدرسے کے کریکلم کے اندر پہلی سے پانچویں کے اندر احادیث شامل نہیں ہے. یہ ہمارے سنگل نیشنل کریکلم کے اندر یہ چیز شامل ہے. اچھا, اب یہ کہ یہ اپارٹھائڈ تو ختم نہیں ہوا. انہوں نے کرنا تو ان کو یہ چاہیے تھا کہ چونکہ یہ ایک اچھا کوالٹی بڑھانا چاہتے تھے تو دیکھتے کہ جو بیسٹ کوالٹی ہے وہاں پہ سب کو اٹھا کے لے جاتے. مدرسوں سے بھی کہتے کہ وہاں تک آئیں, عام اسکولوں کا جو اسٹینڈرڈ خراب ہے اس کو بھی لے کے وہاں تک جانے کی کوشش کرتے. انہوں نے وہ نہیں کیا. میرا خیال یہ ہے کہ جو انہوں نے ڈیفائن کیا ہے, جس کو یہ کہتے ہیں کہ نیا کریکلم, اگر اسلامیات کے علاوہ باقی تمام کورسز کو دیکھیں تو یہ ایگزیکٹلی اپنے تمام SLOs کے اندر, اپنے تمام بینچ مارکس کے اندر 2006 کا جو نیشنل کریکلم ہے ایگزیکٹلی وہی ہے. کوئی اس میں چیز ذرا سی بھی تبدیل شدہ نہیں ہے سوائے اسلامیات کے کورس کے. لہٰذا اسٹینڈرڈ تو وہی ہے جو 2006 کے بعد سے چلا آ رہا تھا, اس میں تبدیلی تو نہیں ہوئی جب تک کہ اسٹینڈرڈ کو چینج کرنے کے واسطے آپ اور کچھ نہیں کریں گے. پھر آپ یہ دیکھیے کہ اس میں جو ہیوی لوڈ ہے, اگر پہلی سے پانچویں تک اتنا زیادہ ہیوی لوڈ ہو گیا ہے تو چھٹی سے لے کے 10ویں 12ویں تک جو اسلامیات کے کورسز ہوں گے اس میں اور کیا کیا چیزیں ایڈ ہوں گی. میرا یہ خیال ہے کہ اس کے اندر مدارس کا جو کریکلم ہے وہ بہت زیادہ اس کے اندر شامل ہو جائے گا. لہذا ان شارٹ جو کچھ ہوا ہے وہ مدرسائزیشن آف کریکلم ہوا ہے. پورے کریکلم کو آپ نے مدرسے کا کریکلم بنانے کی کوشش کی ہے. تو آپ کو یہ چیزیں صاف صاف نظر آتی ہیں. شکریہ. Thank you, Dr. Nair. That was very comprehensive and helps us also understand کہ جو ہوپس تھے, جو چینجز چاہ رہے تھے سنگل نیشنل کریکولم سے جو آئیں گے, اس کے اوپر آپ نے اس کی ایکسٹینٹ جو چینجز کی ان کو بھی آپ نے سمجھا دیا. سو تھینک یو ویری مچ. I'd like to actually turn to you, Mr. Jacob. I know that you're a member of the working group on inclusion, and you're also a member of the National Curriculum Council. So having looked at the Islamiyat curriculum, we'd like to hear some of your perspectives and thoughts on inclusion and whether it creates an inclusion, an environment of inclusion, or is it exclusionary?
Thank you so much, Anya. In fact, while agreeing totally with what Dr. Nayyar has said vis-a-vis intrusion of religious material into several subjects, including the one meant to teach religion. Let me begin by saying that there is a lot of talk about inclusion uh, at the National Curriculum Council and the committee and the experts who are working at the Ministry of Education, Federal Ministry. So I see a lot of good intention existing there, goodwill existing there to inculcate that inclusion. And inclusion, while it is very important to speak about religious inclusivity in our context, it goes beyond religious inclusivity. It talks about persons with disability, gender inclusion, and other things. The fact that I have been invited from the civil society to be part of it also goes to explain that there is a lot more accommodation on part of the ministry than we had it during the previous policy review in 2006, 7, and earlier on. So there is goodwill, and the curriculum that has been prepared for class 1 to 5, which our working group on inclusive education has reviewed, and Dr. Nayyar has rightly explained that we have given the ministry our feedback on 5 subjects elaborate. So our experts like Bela, Dr. Riyaz Sheikh, Dr. Nayyar, Dr. Khalid Masood, Dr. Anjum Paul, they have given extensive feedback on the curriculum that has been given. What we've noted is that you see, whereas we see some improvements as compared to the previous, there are lots of gaps. But apart from that, you see, while there is a single national curriculum being worked out, one province goes abreast, I would say burlesque, and goes and introduces very consequential changes, which is not in harmony with the concept of introducing a uniform single curriculum. And I would like to say a little bit on the process that involves, introduction of these steps and measures. Look at the step introduced for university students, making Quranic education mandatory for passing, master's degree and bachelor's degree. So we have Higher Education Commission, which is not consulted. We have, other bodies, federal and provincial, which are not taken into account. No debate. So just because the governor's office is the ex officio chancellor of the universities, they collect some vice chancellors from Lahore itself. And then Lahore is assumed to be the whole of province. And 2 meetings decide that this measure should be introduced. There's no debate and no expertise involved. And the processes ongoing at the federal and provincial level are ignored. We've heard from PTCB that the Ministry of Education was not consulted in places. In the other example, where an ulama board is set up to supervise the textbooks, similar thing. It is not the job of the assembly when there is an act in place to intrude upon the area which is reserved for executive and administration. Well, they have done so. And the third example, during the same 20 days, the policy measures were being introduced, 3 books were banned, which is again executive function. And that's why you see on the face of it, it looks like you see policy is being run by at different forums. One, it is like fiefdoms, being operated. There is no cross-section interaction or involvement in the decision making. But in the real analysis, when you look at the things closely, there is a policy vacuum, yes, but there are pressure groups operating and who can use certain offices
in the province and the forums to have their will implemented, imposed, I must say, at the policy level. So this is very worrying situation. Not only the consequences, but also the process is, violative of its own rules and regulations. So this is one observation that I would like to make here. Thank you very much, Mr. Jacob. I think that it was very heartening to hear from a point of positivity that there is a sense of inclusion that's coming through, but there are major gaps. And these gaps are quite alarming given sort of the increase in legislation that we're seeing and the speed at which we're seeing it. And now that we've looked at textbooks as well as school level education, let's turn to higher education as well. As I mentioned earlier in my context setting, there was an ordinance passed June 4th, 2020, so very recently, that requires all students to pass a Quran reading and translation examination at the public university level in Punjab if they are to be awarded a degree. I'm conscious that Justice Nasra Iqbal has not joined us yet, but in terms of understanding the different perspectives on this new ordinance and its implication, Belaji, I'd like to just come back to you for a bit of a quick. Alia, can I make a suggestion here? Yes, please. If you could take Justice Nasra on WhatsApp phone, that would be, I think, worth it. Okay, sure. Do you mind just sending me her number? Yes, I will send it to Bella. Sorry. Perfect. Or you can just chat it to me in the chat below. Then I can quickly call her. Thank you. But just to turn to you, Belaji, for a bit of a brief perspective on this new ordinance at the public university level, we'd love to hear from you. So sorry, I'm not wanting to just pass the buck. मगर रियाज शेख साहब भी बैठे हुए हैं और परवेज भी बैठे हुए हैं. Maybe it might be useful. Sure. Their views, because ये लोग higher education से linked हैं. तो मुझे लगता है शायद we'll be getting a better insight knowing what the higher tertiary university education looks like and what the implications such an ordinance may have. So maybe that it might be better to have them respond to that. Absolutely, thank you. We can turn to you, Dr. Hudhai. Would you like to respond to this question? Well, having seen higher education for something like 45 years, I can tell you that we've been through worse. We saw Nayyar and we went through the years of General Ziaul Haq. One thing I don't understand, are we to have this webinar in English or in Urdu? Because I'm getting very frustrated. Somebody starts in English, moves into Urdu, moves back into English. Can't we have just one language? Can't we have a vote on which we want? Otherwise, I feel myself stifled. I'd prefer to speak in Urdu. Well, you're welcome to speak in Urdu. I think you're welcome to speak in Urdu. It depends on everyone's comfort level. It's meant to be a bilingual webinar, but if you prefer just Urdu, bilingual doesn't work. Bilingual means you have no language. That's Pakistan's problem. It doesn't have a single language. Nobody can express himself either in English or Urdu. That's the problem now. Fair. So Nayyar and I have Ziaul Haq's time when even at the university level, in order to get a job in a Pakistani university, you had to know the names of the Prophet's wives. You had to be able to recite Dua Qunut. वो सब कुछ करना पड़ता था. अब ये कुरान की मुसीबत भी उन्होंने सर पे डाल दी है. मुसीबत मैं इसलिए कह रहा हूं कि घर पे तो हम सब कुरान पढ़ते हैं. मैंने बचपन से पढ़ा है. यहाँ अक्सर और बेशतर लोगों ने कुरान पढ़ा है. अब जब हम स्कूल में पढ़ते हैं और हर जमात में पढ़ते हैं, अब यूनिवर्सिटी में भी आके पढ़ना पड़ता है. ये क्या माजरा है? अब एक तरफ तो आपके जहाज क्रैश होते हैं, पीआईए बिल्कुल बैठ गया है, स्टील मिल आपको बंद करनी पड़ी है, पीटीसीएल बेचना पड़ा. यहाँ आपके पास ऐसे लोग हैं नहीं जो इंडस्ट्री चला सकते हैं, जो दुकानें चला सकते हैं, जिनके पास कोई हुनर ही नहीं है. आज सारे पाकिस्तान में आपको
पढ़ाने वाले वो जो साइंस जानते हैं मुट्ठी भर भी नहीं मिलते। तो जहां एक इतना बड़ा बहरान है तालीम का, उधर उनको एक ही चीज सूझती है कि कुरान पढ़ाओ। जिस मुल्क के अंदर बेईमानी अपनी इंतहा पे पहुंची हुई है, जहां मलिक रियाज जैसे लोग हैं जिन्होंने इस गरीबों से लूटा है और फिर वो लूट कर वही पैसा देते हैं मस्जिद को, लाल मस्जिद की तामीर के लिए वो चंदा देते हैं, चंदा अरबों रुपए देते हैं। तो फिर ये इस बात है कि आज पाकिस्तान बहुत सख्त बहरान में मुब्तला है और कि अब हमारे हुक्मरानों को कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो अफीम की गोलियां, अफीम की पुड़ियां बनाकर दे रहे हैं हम सबको। तो अगर हम ये जानना चाहें कि आखिर ये क्यों हुआ है और सिर्फ पाकिस्तान में क्यों हो रहा है, अब जरा देख लीजिए कि दूसरे भी मुसलमान मुल्क हैं, इंडोनेशिया है, ईरान है। ईरान में मैं कई दफा जा चुका हूं। अब ईरान की आबादी जो है हमारी आबादी से 1/4 है, लेकिन आज वो अमेरिका को आंखें दिखा सकता है, इसलिए कि वहां का तालीमी मेयार पाकिस्तान के तालीमी मेयार से कहीं बेहतर है। हालांकि वो एक मजहबी रियासत है, ये याद रहे कि ईरान एक मजहबी रियासत है, लेकिन वहां पर आपका इम्तिहान नहीं लिया जाता कि पीएचडी देने से पहले या बीएससी देने से पहले आपको कुरान का, नाजरे का या हदीस का कोई इम्तिहान देना पड़े। उधर नहीं है। यहाँ क्यों है? तो शायद इसलिए है कि हमारे हुक्मरान इस कदर एक एहसास कमतरी में मुब्तला हैं कि शायद हम अच्छे मुसलमान नहीं हैं, या वो अपने आप को इतना कमजोर महसूस करते हैं कि अगर हमने ये रट छोड़ दी तो मुल्क तितर बितर इसका शिराजा बिखर जाएगा। तो ये इनसिक्योरिटी है, एक अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास है। और अब ये जो पंजाब हुकूमत में ने किया है, ये उस बात की दलील है। अच्छा, मैं आपकी तवज्जो 2017 की तरफ दिलाना चाहता हूँ। उस वक्त पंजाब में जो निसाबी कुतुब पढ़ाई जा रही थी, जो नई कुतुब वहां उस वक्त लाई गई थी निसाब के अंदर, वो बहुत बेहतर थी। वहां पहली बार कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की 11 अगस्त सन 47 की तकरीर जले हरूफ में लिखी थी। पहली बार पाकिस्तान की तारीख में, ज़ियाउल हक के जमाने में वो तकरीर तो हमारी नजरों से ओझल कर दी गई थी। उस जमाने में, आज से 3 साल पहले, तालीमी हालात पंजाब के अंदर बहुत बेहतर थे। अब ये जो हुकूमत आई है उस सब को उलटना चाहती है, क्योंकि इस हुकूमत के पीछे मुल्ला है और फौज है, और ये छुपाने वाली बात तो है नहीं। तो बजाय इसके कि हम इस पे वक्त जाया करें कि इस शिक में क्या है, उस शिक में क्या है, इसको इंक्लूसिव कैसे बनाया जाए, पहले तो हकीकत का आप सामना करें कि ये वो चीज है जो हम पर मुसल्लत की जा रही है। तो बस इतनी सी बात करनी थी। Thank you for laying that out very clearly. And in fact, Dr. Riaz Saab, can we turn to you if you'd like to add anything from the higher education perspective? आप जाबिस के एक्सपीरियंस से भी बता सकें। मेरा ख्याल है हायर एजुकेशन से पहले तो हम प्राइमरी एजुकेशन की बात कर लें, क्योंकि अल्टीमेटली स्टूडेंट्स ने तो वहाँ से ग्रो होकर आना है। जो परवेज साहब ने बात की, इट्स अ वेरी बेसिक प्रिंसिपल, वेदर वी वांट अ मॉडर्न democratic nation state in this country or we want to revive the concept of theocratic state in this country. This is the basic contradiction in this country. हमारा जो तजाद है, तो तजाद ये है कि क्या हम एक ऐसी रियासत बनाना चाहते हैं जो कि एक मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट हो, या हम चाहते हैं कि अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए टाइम एंड अगेन हम वो मजहब का जो कार्ड है उसको यूज करते रहें, और उसको यूज करने के नतीजे जो हैं आज हमारे सामने हैं। कि आपने कहा यूनिवर्सिटीज के अंदर क्या है, तो यूनिवर्सिटीज के अंदर
مشال کی جلی ہوئی لاش مجھے نظر آتی ہے. مجھے بہاولپور جیل کے اندر جو ہے وہ جنید اور اس کا کیس لڑنے والے راشد رحمان کی جو ہے وہ ڈیڈ باڈیز میرے سامنے آتی ہے کہ دس از دا اسٹیٹ آف دا یونیورسٹی افیئر. اب اس کے اندر میں دوسری بات یہ کرنا چاہوں گا کہ after the 18th amendment there was a drastic change اور there was a sea change. اور یہ جو ایجوکیشن کو جو پروویژنل سبجیکٹ بنایا گیا تھا ultimately it paid a result. ہم نے اسپیشلی بیکاز آئی واز پارٹ آف کمیٹی وچ واز ورکنگ آن ریویو آف دا سلیبس, ڈاکٹر ڈین کے ساتھ مل کے ہم نے کام کیا. ڈراسٹک چینج, آپ سلیبس کو دیکھیں, you will feel کہ دی ہیوج چینج has been made. We have included the concept of scientific inquiry and criticism in the syllabus. یہ جو آنکھیں بند کر کے فیکٹ کو ایکسپٹ کرنے کا جو کانسیپٹ ہے that has to be withdrawn from this concept. ہم نے یہاں پر تھرو دس پروسیس ان کو فیل ہوتا ہے کہ یہ جو کرٹیکل کوشچن ہے, یہ جو انکوائری کا کانسیپٹ ہے, یہ الٹیمیٹلی بچوں کے اندر ایک وہ مائنڈ کریٹ کرے گا جو الٹیمیٹلی جا کر 68 اور 69 کی اور اس کے بعد کی جو مومنٹس ہیں ان کو جنریٹ کریں گے. یہ اس سے ڈرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں یہ ساری چیزیں ہمارے پاس سامنے آئی ہیں. دوسرا جو میجر ایشوز ہے, اب ہم جب کمپیئر کرتے ہیں تو مجھے نظر آتا ہے کہ جی when we talk about inclusion of all these things and these like ہماری کولیگ نے جو پنجاب سے آئی ہیں انہوں نے یہ بہت سمپل کیا کہ شاید سوشل اسٹڈیز کا سلیبس یا ایک دو سلیبس ہی ریویو ہوں گے. ہمارا بیسک ایشو تو یہی ہے نا کہ آپ ایک ایسے لوگ پیدا کر رہے ہیں جو کہ انٹالرنٹ ہیں تھرو دس اسکول سلیبس اور تھرو یونیورسٹی سلیبس. تو آپ کس طرح آپ کہتے ہیں کہ میتھمیٹکس کا سلیبس ریویو نہیں ہوگا, مانا کہ میتھمیٹکس کا سلیبس ریویو نہیں ہوگا, تو کیا آپ کا جب پاکستان اسٹڈیز کا یا سوشل اسٹڈیز کا سلیبس ریویو ہوگا تو کیا ان کے اندر آپ انکلوسیو ماڈل رکھیں گے, کیا آپ نیشن ہوڈ کا کانسیپٹ اپنے اندر رکھیں گے؟ تیسرا میرا ایشو یہ ہے کہ ماڈرن سلیبس جو ہیں they talk about the progress, they talk about the movement, they talk about the future things. لیکن یہ جو ریلیجیس بیسڈ سلیبس ہے they talk about the inertia. Inertia means you have to stop at some place, you have not to talk the new concept because it's a challenging for you. تیسرا جو مجھے نظر آتا ہے وہ آپ کو یاد ہے کہ جب اسکول کے ہم سلیبس انکلوڈ کرتے ہیں تو الٹیمیٹلی سائنس بیکم اے کنٹراڈکشن ٹو ریلیجن کے جو کانسیپٹ ہیں یو کانٹ کیری یور فیوچر. اب مجھے بتائیے آج ہم سائنس میں کہتے ہیں کہ انڈر ایج میرٹ انڈر دا ایج آف 18 از ناٹ الاؤڈ, جبکہ ہمارے ہر مدرسے کے اندر اور ہر مدرسے کا جو سائنٹیفک جو ہمارے مدرسے کا اپروچ ہے کہتے ہیں کہ جی کسی ایج میں بھی شادی جائز ہے. مجھے بتائیے کہ اگر میں نے سائنٹیفک سلیبس پڑھانا ہے تو میں نے کیا وہ سائنٹیفک اپروچ پڑھانی ہے کیا, یا یہ جو مدرسہ نظامیہ سے اپروو کرا کے سلیبس پڑھانا ہے کہ کسی بھی وقت کی جائے. اس کے ساتھ ہم نے بہت سی چیزیں انکلوڈ کی جس کو میں سمجھتا ہوں کہ بہت, مجھے پنجاب کے انفارمیشن منسٹر جو ہے چوہان صاحب کی جو ہے کچھ دنوں پہلے کی ڈبیٹ یاد آتی ہے, آپ کو بھی یاد ہوگا. انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو معذور بچے ہیں یا یہ جو دوسرے جنڈر کے بچے ہیں یہ تو اللہ کا قرض ہے, یہ تو اللہ کا عذاب ہے ہمارے اوپر. تو مجھے بتائیے کہ آج اگر وہ منسٹر آف ایجوکیشن بن جاتے ہیں تو کس قسم کا سلیبس ہوگا, کس قسم کی ٹیچنگ امپارٹمنٹ ہوگی. یہ میرے خیال میں بہت سارے ایشوز ہیں جن پر بات ہونی چاہیے. تھینک یو. Thank you. I think you touched on a lot of the themes and topics that are most pertinent. I'm conscious of time. We have about 30 minutes to go before we have to get into the Q&A. So with this context, I'd like to move us on to actually speaking with Justice Nasra Iqbal. I have her on WhatsApp now, and I'm just going to ask her a question. But before I do, I just want to test कि अगर आप लोगों को आवाज आ रही है. So Kamila, can I ask you to let me know if you can hear? Justice Nasra Saab, can you speak? Kuch kahin? Yes, Assalamu alaikum. Thank you very much for all this effort. And I'm sorry, I don't know why my Zoom was not working and I couldn't get onto the link. اگر آپ کو آواز آ رہی ہے تو آپ ہاں جی آ رہی ہے, بالکل آ رہی ہے. میں آپ کو ذرا کوشچن پوز کر لوں. ٹھیک ہے, thank you. So just looking at the legal environment and the ecosystem and the recent legislation that has been passed, the ordinances and amendments, we're very keen to gain your perspectives on the role and the implications of such legislation on our education system. جو انہوں نے کہا ہے کمپلسری ہم کا کریکولم میں آپ کے لیے قرآن سیکھنا اور یہ باقی تمام اسلامک انجنکشن سیکھنا. تو دیکھیں قرآن میں تو لکھا ہوا ہے لا اکراہ فی الدین,
اور اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اگر میں چاہتا ہوں تو میں ہر ایک کو ایک ہی رنگ اور ایک نسل اور ایک ہی عقیدے میں پیدا کرنا، لیکن میں نے سب کو یہ آزادی فکر دی ہوئی ہے تاکہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ اچھے کاموں میں مقابلہ کریں. تو یہ اچھے کاموں میں مقابلہ جو ہے اس میں آپ کسی کے اوپر یہ بات کمپلسری تو کر ہی نہیں نہ سکتے کہ آپ نے ضرور یہی سیکھنا ہے. اور دیکھو جب قائد اعظم نے کہا تھا اپنی تقریر میں کہ یو آر فری ٹو گو ٹو یور ٹیمپلز، یور چرچز اینڈ یور synagogues, and in this day we are all free citizens, equal citizens of this country. تو پھر یہ بات تو میرا خیال ہے یہ ایشو ہمیں کبھی ریز کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. Thank you, یہی جواب ہو. And I think the other speakers may probably share the view. I don't know whether there's any contribution to this. Thank you very much, Dr. Thank you so much, Justice Nasra Iqbal. I think that yes, indeed, we've had lots of mention of similar thinking. Bella, would you like? It is. You may not be able to reconnect with her. If there is another question that you would like to ask Ania or Bella, Justice Nasra, उससे दोबारा अगर पूछ लें तो अगर कोई question करना है तो she may not be able to connect. Okay, no, that's fine. Justice Nasra said, not Saab, sorry. Are you okay to stay on WhatsApp to be able to hear? And if okay. That's okay. I'll try to position it next to my laptop. Thank you very much. Thank you. Okay, great. I am, of course, absolutely. I am conscious of time, and I'd like to step into the second section now to actually start to understand the implications of such legislation on learning, the quality, access. And with that, I'd like to pose my first question in this section to Bela ji. Can you please highlight some of the impacts of recent legislation on learning equality? So, quality, not equality, especially given that Pakistani students are already experiencing this global learning crisis, which has only been exacerbated by COVID-19. Now we have the additional layer of a learning deficit crisis. So could you comment on that, please? देखिए आनिया, मैं शायद ये ओवर कोटेड है, मगर हमेशा असर का डेटा देती हूँ जो कि बहुत बुनियादी सा डेटा है, और वो दूसरी जमात के ऊपर मैप्ड एसएलओज हैं जिसके ऊपर हम रीडिंग को देखते हैं, कॉम्प्रिहेंशन को. तो अगर हम देखें कि अगर सरकारी स्कूलों को देखें तो हमारे अभी भी में है जो दूसरी जमात को कहानी या पैराग्राफ नहीं पढ़ सकते, और अगर प्राइवेट स्कूल्स को देखें तो इसी तरह से वहाँ पे भी कोई तकरीबन 31% बच्चे ऐसे हैं जो नहीं पढ़ सकते 5वीं जमात की दूसरी की. जहाँ पे इतने बड़े डेफिसिट्स हों और ये कोविड की वजह से लोग लर्निंग लॉसेस की बातें कर रहे हैं कि 30% से 40% इम्पैक्ट होगा, तो जहाँ पे इतना बड़ा मसला हो तो अगर आप सिंगल नेशनल करिकुलम जैसे ही सामने आएगा, मगर चूंकि कुछ लोगों ने हमें इसे रिव्यू किया है, हमें लगता है बहुत हैवी है. और जब आप बच्चों से, अब ये एक सब्जेक्ट है और जाहिर है कि बहुत सारे सब्जेक्ट, इवन पहली से तीसरी तक बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, तो वो जो अभी नासरा ने बात की थी, जस्टिस नासरा ने, कि देखिए अमल का तराजू भारी होना चाहिए, ना कि सिर्फ घोटे लगाने का. और अमल का तराजू जो है वो उसके लिए हम तरबियत के लिए क्या स्कूल में करते हैं और बच्चों के लिए हम क्या तरीक़ेकार इस्तेमाल करते हैं कि जो बड़े लर्निंग लॉसेस हैं, लर्निंग डेफिसिट है, पाकिस्तान में बहुत बड़ा क्राइसिस है, और मुल्कों में भी है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है. मगर आई थिंक वो जो लर्निंग के चैलेंजेस हैं उनको हम कैसे सर करें. ये अब 6 महीने से ज़्यादा हो जाएंगे जब तक, अगर 15 सितंबर को भी स्कूल खुलते हैं, मालूम नहीं कितने बच्चे आएंगे. और चूंकि आपको मालूम है हम अफ़गानिस्तान से बस थोड़ा सा आगे ही हैं साउथ एशिया में, मगर ये है कि एनरोलमेंट तो छोड़िए, सीखने सिखाने का जो अमल है वो बहुत पीछे है. अब इतना बर्डन जब सब बच्चों पे हो जाएगा मजहब का और इतना कुछ सीखने का और क्रैम करने का, तो वो जो शौक हमारा है कि हाँ हम चाहते हैं कि कुरान समझा जाए माने के साथ, तो वो बच्चे जो
بنیادی چیزیں نہیں پڑھ سکتے وہ قرآن کو کیسے سمجھیں گے؟ ہاں ان کے لیے کہانیوں کے ذریعے، تربیت کے ذریعے کہیں زیادہ آسان ہوتا ہے اس کو سمجھنا. تو مجھے لگتا ہے جیسے یہ بہت زیادہ بڑا برڈن ہے، اور مجھے نہیں معلوم ٹیچرز کس طرح سے اس سے کوپ کر سکیں گے، کیونکہ جب یہ نیشنل کریکولم سامنے آئے گا تو پھر ہمیں احساس ہوگا کہ کہیں جنرل نالج ہے، کہیں ارتھمیٹک ہے، کہیں اردو ہے، کہیں یا اپنا سندھی ہے، اسلامیات ہے، بہت سارے سبجیکٹس ہیں ایون لوور پرائمری تک. تو جب تک ہم اپر پرائمری پہ جائیں گے تو اور بھی مسئلے ہیں. مجھے تو اس وقت سب سے بڑا جو ایک مرحلہ لگتا ہے، اور جو لگتا ہے کہ ایک بہت بڑی ایک ہماری ایپک ٹریجڈی ہے، وہ ہماری ایک لرننگ کی ٹریجڈی ہے. اس کو ہمیں کسی نہ کسی طرح سے عبور کرنا ہے، اور اس کے لیے ہمیں کچھ تخلیقی سوچ سامنے رکھنی پڑے گی. کوشش بہت ہو رہی ہے، جیسے حکومت نے کہا ہے کہ ہم ایک اپارتھائڈ کو توڑنا چاہتے ہیں، ختم کرنا چاہتے ہیں، سب کے لیے ایک ہی صف میں سب لوگ کھڑے ہوں، اور یہ بہت اچھی سوچ ہے. مگر جو اس کے طریقہ کار ہیں پریکٹیکلی، وہ مجھے لگتا ہے کافی دشوار لگتے ہیں. اور یہ جو چاہے یہ امینڈمنٹ بل پاس ہوا ہے، تو ہمیں نہیں معلوم کن کن چیز کو سے اپنا تحفظ کر رہے ہیں. ہمارا مذہب یا ایمان خطرے میں ہے، ہمارا عمل خطرے میں ہے، مگر سب سے بڑھ کے تو ہماری بنیادی لرننگ خطرے میں ہے. اور اگر لرننگ نہیں ہوگی تو ہم کیسے جدید تقاضوں کے حساب سے آگے بڑھیں گے؟ یہ ایک بہت بڑا ہمارا المیہ ہے. اس کے بغیر ہمارے نہ حقوق ملیں گے اور نہ ہماری کیپیبلٹی آگے بڑھے گی، صلاحیتیں آگے بڑھیں گی. یہ آئی تھنک یہ ایک بنیادی، مجھے تو لگتا ہے ایک بہت بنیادی ہمارا ایک المیہ ہے، جس کو ہمیں کہیں نہ کہیں تو کہیں اس کا بیڑا پار لگانا پڑے گا. تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ ڈسٹریکٹرز ہیں اس وقت. کیوں ہیں یہ نہیں مجھے معلوم. تھینک یو بیلا جی. اور بلکہ اس کو تھوڑا آگے ایکسٹینڈ کر کے یہ بھی کہ دیکھا جا سکتا ہے کہ جو لوگ اگر اس کنٹری میں جو مسلمان نہیں بھی ہیں، ان کے لیے تو یہ sort of direct otherization اور ostracization ہو جاتی ہے. And what we're also finding is that in several schools where teachers, especially in very rural areas, جہاں پہ teachers کی subject specialism نہیں ہے یا ان کو ٹاپکس وغیرہ جو ریگولر ٹیکسٹ بکس کا پڑھانا نہیں آ رہا، سو یو آفن فائنڈ کہ وہ ریلیجن پڑھاتے ہیں. اینڈ میں کیا ہو رہا ہے کہ بچے روٹ لرن کر رہے ہیں عربک کو، تو اپنی مدر ٹنگ یا اردو یا کوئی اور زبان نہیں سیکھ رہے، وہ روٹ میمورائز کر رہے ہیں عربک کو سمجھے بغیر. So you're starting the foundation with reading without comprehension. So continuing on learning, as well as now maybe actually going a bit wider, and Zubaida ji, I'd like to turn to you now. If we analyze this situation from a human rights angle, what are your views on the influence of recent legislation and the upcoming curriculum on citizens' aspirations and participation? شکریہ آنیا. میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی بالکل آ رہی ہے. اچھا، نہیں میں مختصراً یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ ہم لوگ کی جو تعلیم جس طرح تھی، آپ ابھی مذہب کو تو نہ لائیں، یعنی جو پہلے جو بھی تھی مذہب تو رہا ہے، تو وہی ہم لوگ کی اس کے خلاف رہی ہے. مساوات کا جو ایک آئیڈیا ہے، کانسیپٹ ہے، جو ہمارے دستور میں بھی ہے، وہ اس کے خلاف رہی ہے. اس طرح کی تعلیم تو، اور ہم لوگ کو یہ تو وزیر اعظم صحیح کہتے ہیں کہ بہت سارے اس میں یعنی طبقے بنے ہوئے ہیں، لیکن جو ان کا طریقہ کار ہے وہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس سے لگتا ہے کہ ان کے یہی نہیں سمجھ میں آیا کہ کس وجہ سے یہ طبقے بن رہے ہیں. یہ تو ایک چیز ہے. دوسرے، جہاں تک جو تعلیم ہے، میں یہ کہہ دوں کہ 25A میں سب سے بنیادی چیز تو لی نہیں گئی. وہ کہتے ہیں کہ تمام بچوں کو 5 سے 16 سال کی عمر تک تعلیم دی جائے گی، لیکن تعلیم کس قسم کی جیسی مل رہی ہے؟ تو یہ تو کوئی یہ نہیں ہے کہ آپ کو جیسے سینسس میں آپ سب گنتی کر لیں کہ اتنے بچے اسکول میں، اتنے باہر ہیں، ان کو سب اسکول میں لانا ہے. جو کہا تھا حکومت نے، اپنے جو فریم ورک تھا ان کا ایجوکیشن کا، کہ ان سب بچوں کو اسکول میں لانا ہے، لیکن تعلیم تو آپ صحیح کریں. اب رہا جہاں تک یہ مذہب کا سب، تو 2 بس بنیادی چیزیں میں اسے سوال کی طرح کہوں گی، کیونکہ میرے خیال میں ہم لوگوں کو سوچنا یعنی ان کو نہیں آتا، اور نہ ہم لوگ جو تعلیم یافتہ لوگ جو کچھ سوچ سکتے ہیں
वो भी उनको नहीं बताते कि आप सोचें। तो मैं तो बस ये पूछूंगी कि अगर मजहब और इस वक्त है इतना हम लोग के तालीम में, तो उसके बावजूद तालीम जो मेयार तालीम है क्यों इतना गिर रहा है? जैसे परवेज हुसैन ने कहा, डॉक्टर नैयर ने कहा, डॉक्टर रियाज शेख ने कहा कि हम यानी अपने बड़े इदारे, क्या छोटे इदारे भी तो नहीं चला सकते ठीक से, क्योंकि जो बच्चे पढ़ के निकल रहे हैं उनमें, अब कल ही एक डॉक्टर साहब मुझसे कह रहे थे कि डॉक्टर जो नए निकल रहे हैं उनको कुछ नहीं आता। एक तो सवाल ये है। दूसरा, जहाँ तक मजहब का है कि अगर आप मजहब पढ़ा रहे हैं इसलिए कि आप लोगों को अच्छा मुसलमान बनाना चाह रहे हैं, जो कि कहा जाता है कि इसकी मकसद ये है, मैं तो कहती हूँ कि आप लोगों को उनका पोटेंशियल है अच्छा इंसान बनाए और वो, लेकिन फर्ज कीजिए हमने मान भी लिया कि अच्छा हुकूमत ये चाहती है, इतने सालों से आप मजहब की तालीम दे रहे हैं जैसे भी है, तो हमारा माशरा और खराब क्यों होता चला जा रहा है? सवाल तो यही है कि जब आप एक लेवल तक जो भी पढ़ा रहे थे, माशरे में और बुराइयां आई चली जा रही हैं और करप्शन हो रहा है, और जैसे परवेज ने कहा किस किस्म के यानी जो लोग निकल रहे हैं, किस तरह पैसे का जो भी यहाँ एक वो बाजार बना हुआ है। तो अभी तो मेरी राय ये, मैं आपको उसके लिए भी कह दूं कि क्या सामना पता नहीं वो आनिया कि आप रिकमेंडेशन में रिकमेंडेशन यही दें कि आप फिलहाल मजहब को उसमें से निकाल लें या स्टेटस को पे चले जाएं, और आप इन लोग का जो उलमा है उनकी कोई कमीशन बना के उनसे कहें आप लोग फैसला करें। आपको याद है 53 में भी हुआ था जब मुनीर रिपोर्ट आई थी, जब ये यहाँ पे लाहौर में राइट्स हुए थे और अहमदियों के खिलाफ, तो उन लोग ये तक फैसला नहीं कर सके थे कि किसको आप मुसलमान कहेंगे क्या। तो इन लोग फैसला करके बताएं हम लोग को कि आप क्या पढ़ाना चाहते हैं और उस पर छोड़ दें, फिलहाल इसको थोड़ा सा छुट्टी दे दें, जिसे कहें। शुक्रिया। Thank you, Zubaida ji. Thank you very much, and also for injecting a clear sense to go ahead. Thank you very much. I'd like to turn back to you, Dr. Hudbhai. कि जो ज़ियाउल हक के टाइम में तो पॉलिटिकल इम्पेटस हमें पता था कि ज़ियाउल हक से आ रहा था, आपके ख्याल से करंटली कहाँ से ये इम्पेटस आ रहा है और जो सोसाइटी को इसकी कॉस्ट पे करनी पड़ रही है, उस पे आप अपना पर्सपेक्टिव दे सकते हैं? तो देखिए, ज़ियाउल हक के ज़माने में एक ऐसी पौध तैयार हुई जिसने फिर हर चीज़ को मजहब के साथ जोड़ना चाहा। इसका नतीजा ये हुआ कि जो तंजीमें यहाँ पर हैं, वो जो मुसल्ला तंजीमें हैं, उनको नफरी मिली और उन्होंने जिहाद का एहतमाम किया। वो जिहाद जो अफगानिस्तान में किया गया और फिर कश्मीर में और फिर हमारे अपने ही लोगों के खिलाफ। हम इस बात से इनकार करते रहे और कहते रहे कि ये बाहर वाले हैं जो आकर यहाँ अपने आप को फाड़ते हैं कि खुदकुश इधर के नहीं है, वो मुसलमान हो नहीं सकते। और फिर ये सब कुछ हमने जो भी सबूत था उसको हम एक तरफ कर देते थे। फिर 16 दिसंबर को जब 2014 के रोज जब आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमला हुआ, तो फिर हमने उसके बाद ज़रबे अज़ब और फिर ये ऑपरेशंस करते रहे और फिर हमने आखिर ये बात मान ली कि ये हमारे लोग हैं, मुसलमान हैं, जो दूसरे मुसलमानों को चोट पहुंचा रहे हैं और वो इसलिए मार रहे हैं दूसरे मुसलमानों को कि वो समझते कि उन्हीं का इस्लाम सच्चा है। और ऐसा यूं मुमकिन हो सका कि उनके अंदर कूट कूट के मजहब भरा गया। उनसे ये कहा गया कि जो राह रास्त से भटका हुआ है उसको आप निशाना बना सकते हैं। आखिरकार हमें अंदाजा होने लगा कि कितना बड़ा हमें नुकसान पहुंचा है मजहब को बुनियाद बनाकर, रियासत की बुनियाद बनाकर। तो काफी देर तक तो हम ये समझ नहीं पाए, लेकिन आखिर ये थोड़ी सी अकल आने लगी और फिर आप ये देखें कि नवाज शरीफ के वक्त में उससे कुछ दूर हम हटने लगे
लेकिन फिर वो ताकतें जो कहती हैं कि रियासत को मजहब के साथ जोड़ो, वो फिर हरकत में आ गई। और ये तो हमने फैजाबाद में भी देखा था और खुलकर देखा था जब वो रेंजर्स के डीजी जो है नोट बांट रहे थे, वो सब कुछ देखा। अब मुलायत का एक और दौर आ गया है और उसका मजहर अब हम तालीम के अंदर देख रहे हैं। तो अगर इस वक्त भी हम खामोश रहे और कहे और हमने अगर ये कहा कि अच्छा ठीक है, बस ये तो एक छोटी सी चीज है कुरान पढ़ाना, तो फिर इसके बाद क्या होगा और उसके बाद क्या होगा। अब मैं इस मुश्तरका कौमी निसाब की तरफ आता हूं। हम मदारिस को तो ठीक कर नहीं सके, जो मदरसा के इस्लाह के प्रोग्राम थे वो सारे के सारे बैठ गए। मुशर्रफ के जमाने में, नवाज शरीफ के जमाने में वो सब नाकाम हुए। अब वो नाकाम हुए तो हमने कहा अच्छा हम उनको ठीक नहीं कर सकते, तो चलो हम अपने स्कूलों को मदरसे बना देते हैं। पहले ही काफी वहां मजहब हम कूट कूट को उनको पिला रहे थे, पुड़ियां उसकी बनाकर दे रहे थे। अब हम ये कहते हैं कि थोड़ा और करने से शायद ये ठीक हो जाए। मगर देखिए जो असल चीज है कि हमारे यहाँ इंस्टीट्यूशंस नहीं चल पा रहे हैं। वो इसलिए नहीं चल पा रहे हैं कि जो हमारे स्टूडेंट्स निकलते हैं, जिनके हाथ में सर्टिफिकेट है या जिनके हाथ में डिग्रियां हैं, वो ऐसी तालीम से नाबलद हैं जो जदीद जमाने के तकाजे पूरे कर सकती हो, और अब हम उनको और ज्यादा दूर कर रहे हैं उससे। तो इस वक्त जो मुहरिकात है, मैं समझता हूँ वो पीटीआई की तरफ से है। पीटीआई जो इस मुल्क के नौजवानों को मुतहरक करने में कामयाब हुई, और जिसके पीछे हमें पता है कि खलाई मखलूक है, और जिसके पीछे और जो खुद इस मुल्क को अपना जो समझते हैं कि हम ही इस मुल्क के रखवाले हैं, वो फिर से अपने तबाही का सामान तैयार कर रहे हैं और हमारी तबाही का सामान तैयार कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि उनको याद दिलाने की जरूरत है 2014 में क्या हुआ, उससे 10 साल पहले पाकिस्तान के जहन्नुम में था, और उस आग से निकलते हुए हम थोड़ा सा आगे निकले तो पलट कर उसमें वापस जाना चाहते हैं। तो ये मेरा ख्याल है वो मोहरत है। ये इस बारे कि हमारी सोचने समझने की सलाहियत मफकूद हो गई है, खत्म हो गई है। आर वी क्रेजी दैट वी कांट लर्न द लेसन्स ऑफ द पास्ट? थैंक यू। Thank you, Dr. Hoodpai. It was a very powerful perspective, and the way you wove history into it. I think the lessons come out quite clearly, and I'm sure they'll resonate. I'd like to, at this point, turn to our last section, which I think throughout we've had questions by the panelists that have shaped our thinking to start thinking ahead कि कौन से सवाल अब पूछे जा सकते हैं जिससे शायद लर्निंग भी बेहतर हो जाए। 1980 से पाकिस्तान के स्कूलों में इस्लामियात कंपल्सरी रही है, so we're already teaching that. About 20 to 40% जो हमारा करिकुलम है सोशल साइंसेज, हिस्ट्री, अदर लैंग्वेजेस में 20 to 40% ऑलरेडी उसका इस्लामियात पे फोकस कर। लेकिन अगर हम आगे की तरफ देखते हैं, I'm conscious that we have 10 minutes and we'll have to wrap up this section in 10 minutes so we can turn to Q&A. हमारे already कोई 30 सवाल already आ चुके हैं, so I'll turn to Kamila for that. Dr. Panjwani, I'd like to turn to you. Thank you for being so patient. We have such a fantastic and esteemed, massive panel today, so I appreciate you waiting so patiently. So Dr. Panjwani, you are the director of the Center for Education and Muslim Contacts at UCL. Are there examples of religion and education from other Muslim countries or contexts that may be of relevance as a way forward for us in Pakistan? Thank you very much. Really fascinating discussion, and I learned a lot through this. If we take a panoramic view
of the relationship between education and religion in different Muslim countries, let's say over last 50 or 60 years, I think we will find a spectrum of the ways in which religion and education have interacted. And in fact, in a single country at different points in time, we will see this relationship changing. Look at Bangladesh, for example. Look at Turkey. At one point, Ataturk tried to secularize the entire education system and really tried to do away with religious education, but it is coming back quite strongly now. Tunisia is another example which had a very liberal secular mode of education, is now going through a struggle between more conservative and progressive forces. Iran is another example. I think there have been phases in the history of Muslim countries where they had managed to create a more progressive approach to education and religion. But my sense is right now, overall trend is more towards conservative and more dominant approach to religious education that we see. However, I think there are 4 lessons that we can perhaps draw by looking at that panorama of relationship between religion and education in Muslim context. One is that whenever countries have tried to impose a single story of religion, one model of what religion is and history of religion is, it has backfired. It has backfired not only for the minorities, but also for the majorities. And we should also recognize that countries are never Islamic as such. They are always a particular denomination within Islam. If you look at Saudi Arabia, Iran, or Pakistan, they then are a particular denomination that they are imposing. So they often actually marginalize other Muslim communities as well by imposing a single story. And it has, I mean, others have already talked about how it has been detrimental in Pakistani context. So that's the first lesson. I think the second lesson is where good relationship between education and religion have happened. They've happened when the state has let the society evolve different models. And, you know, ironically, I think a good example is perhaps not to be found in any of the Muslim countries, but in England. Now, England has a state religion, theoretically, because the Queen is also the head of the church, but it also espouses to be a democratic country with all its shortcomings and everything. But in the area of religion and education, it has made some progress that you can see that there are millions of Pakistanis and Bangladeshis and Indians and Muslims in England and UK more generally, and they're by and large satisfied with what is there. And the reason is that the society has evolved different options that are available to parents depending on their own desire for religiosity. So those parents who wish the children not to have much religious education in school, they, and it seems the majority are like that, even in the Muslim context, they can send their children to what is called the state or community schools there, where they talk about not religion to make people more religious, but education about religion. And it's also multi-faith religious education. So you learn about 4 or 5 different religions. And in that sense, you learn about the other in an educational context. So education becomes the primary thing and religion is part of it rather than other way around. Those who want more Islam and want education itself to be framed in Islamic context, they have 200 or so what is called Muslim schools or Islamic schools, where they teach national curriculum, but also try to bring in Muslim ethos and ways of living. Those who want to go even further, they have what we might call in Pakistan madrasas and what are called in the UK Darul Uloom, where they even teach Dars-e-Nizami. And there are 25 of those, and some parents send it there. And most parents try to do what also happens in Pakistan, that they would send their children to more secular schools, but in the evenings or weekends, they will have supplementary religious education, maktabs as we would say. So I think what has happened there is models are available for parents to choose what they want to choose rather than imposition of a top-down model. And I think that seems to satisfy many people. And a multi-faith religious education works. That's the second lesson. Third lesson, I think, and there are 4 lessons. Third is
The role of the state in this context, in the UK context, becomes regulatory. It ensures that whatever mode of religious education is there, it works within the framework of human rights. So you are not allowed to use the religious education for discriminatory purposes, for racist purposes, for hate speech, for all of these things. It has to be worked within an educational and human rights perspective. And fourth thing that I think we can find, and this we can find in many Muslim contexts, that many times the distorting effects of perhaps too much religious education and dominant religious education sometimes can be countered by better education in humanities and also sciences, but I can talk more on humanities. So better teaching of literature and better teaching of history, which then allows young people to understand how things, institutions evolve historically, how multiple interpretations take place, how texts require context to make sense. These are important things that should be part of religious education as well. But when they are not, perhaps some other aspects of curriculum, if they are taught better, they can provide the counter to some of the problems that we see happening through perhaps a distorted way of approaching religion. So these are the 4 lessons that I think if we look at the relationship between education and religion outside Pakistan in many other contexts, we might be able to draw from us. Thank you. Thank you, Dr. Panjwani. That was really comprehensive, and I think it helps tease out the details and specifics of how you don't have to have such an absolute relationship with religion's inclusion in education. So thank you with that. I'd like to just request Justice Nasra Iqbal, who's again on WhatsApp with me. Justice Iqbal, could you also provide your perspective in terms of going forward and on the role of education as an inclusive, as a medium for inclusion, actually? Pakistan was conceived as a pluralistic society. It was never a state which was a theocratic state. Theocratic state सिर्फ 2 है, एक ईरान में है और एक इस्राइल, and we were neither of them. And the concept of the founders of Pakistan was that इस मुल्क में एहतराम इंसानियत होगा, respect for pluralism and freedom of thought and conscience and a study of your history. आप देखिए कोई तारीख का करिकुलम में नहीं, मैं छोटा सा खैराती स्कूल चलाती हूँ, तो जब करिकुलम मंगाती हूँ उसमें तारीख का जिक्र ही नहीं है. There is a subject called social studies. अब social studies में अंदेशा बरहमी खुदा वतन इक़्तिदार ज्यादा होता है और तारीख कम. तारीख होती ही नहीं. तो जब तक हम अपनी तारीख नहीं पढ़ेंगे, कहते तो है ना फिक्रे पर्दा ना करूं वह गबे दोष रहूं, लेकिन तारीख से जो हम सबक सीखते हैं कि हमारी गलतियां क्या हुई. 5 हमारे यहाँ थे सूबे, एक सूबा जो था जो मेजॉरिटी सूबा था उससे हम अलहदा हो गए इसलिए कि हमने उनकी कदर नहीं की. एक जो कदरदानी होती है ना हर इंसान की, जिसको एहतराम इंसानियत कहा जाता है, वो जब तक हम नहीं सीखेंगे और अपनी तारीख से सबक नहीं सीखेंगे और आगे की तरफ देखना नहीं चलेंगे और बच्चों को अपना ज़हन इस्तेमाल करें. देखिए क्लास में बच्चों को सवाल करने की सलाहियत होनी चाहिए. इस्तिज़ा को ट्रेनिंग हमने देनी है कि बच्चे सवाल करें और कई दफा बच्चों को जवाब बेहतर आ गए. मेरी पोती से मैं सोलर सिस्टम की बात कर रही थी तो कहने लगी कि दादी आपको पता है दिस प्लैनेट दैट यू आर मेंशनिंग इट हैज बीन कंडेम्ड, इट इज नो लॉन्गर इन द सोलर सिस्टम. I didn't even know. So you can learn out of the mouth of babes the truths that we have to know, and that is why interactive हमारी learning होनी जरूरी है. That's all I wanted to add. इतनी ज़हीम बातें सबने की माशाल्लाह. Thank you so much. Yeah. Is it possible for me to ask a question of Dr. Panjwani? Yes. I listened to you with a great deal of attention. One thing that I don't, you said we should teach counter subjects. So if we teach science well, then that'll be a kind of counterweight. Now, unfortunately, there are lots of examples that I can give you where it becomes impossible to teach science well because of the interference of our religious authorities. Well, to give you one example, the theory of evolution. It's taught in our books, but it is always preceded with
with something like this. You are to read this at your own risk. It doesn't make sense. In fact, it's complete nonsense, but because it's part of the biology curriculum, therefore go ahead and read it. I could give you other examples too, but you see, it's not as easy as you would have us believe, perhaps. Well, no, I'm very well aware of that. In fact, let me add to this that we also know that some of the extremists and terrorists that we have found were very well educated in technology, at least, if not science as such. They come from very technical backgrounds. There is, in fact, a book called Engineers of Jihad, which brings out how disproportionately people from science and technological backgrounds are attracted to Muslim extremism. That is why I did not just refer to science. I emphasize the humanities as well, because I think the teaching of literature and the humanities, history, becomes very important. That's where you learn to see the world in a gray shade rather than black and white. That's where you understand the importance of your own interpretations in the text. That is where you understand how interpretations are contextual and multiple. I'm not saying these are easy things. I'm simply saying that these are some of the ways, if we want to struggle, these are the ways that we should be struggling for. And in fact, I would draw upon Gramsci, who once said that what we have is a pessimism of intellect, but optimism of will. So I'm simply speaking from that optimism of will, that if we do want to have a way forward, there are these things that we can struggle towards. But I fully accept your point of view that it's not easy, it's very difficult. But if we want to struggle, there are some ways and some possibilities that we can struggle for. Thank you. Thank you. I think this type of discourse is absolutely key to this webinar. Just a quick update for all. We're conscious that it was to run for 90 minutes. If I can just request the panelists to stay on for an extra 15 minutes. Completely understand if you cannot, but we will then be able to use those 15 minutes for Q&A. Great. Okay. Thank you, Dr. Panjwani, and thank you, Dr. Hudhai. I'd like to turn back to you, Maimoona, in understanding the plans, the future plans that PCTB has. So we saw, progressive initiatives such as Taaleem Ghar come out of the Punjab government. In that vein, we're just very curious to understand, given COVID-19 and the ever-changed new normal, what plans does the Punjab Curriculum and Textbook Board have to create an inclusive environment for learning for all in Pakistan? You're on mute, Maimoona. Thank you so much for taking me again. So in this COVID situation, the Punjab Curriculum and Textbook Board, they are planning, as you know, the time has been gone around 4 to 5 months has been wasted. The student couldn't go to school. So in this, if in case God, alhamdulillah, agar Allah करे कि हमारा ये open हो जाए schools 15 सितंबर से, तो इस वक्त जो हम कर रहे हैं accelerated learning program prepare कर रहे हैं from grade like कच्ची पक्की से लेके FSC level तक का, just to give कि उसमें जो curriculum है या जो text books हैं वो बच्चों को 4 months के reference है, क्योंकि rest over hardly 4 months would be left over अगर 15 सितंबर onward school open हो जाते हैं तो 4 months के लिए we are working for the accelerated learning program, जिसमें जो initially जो most important topics हैं उनको लिया जाए, जिसका के बच्चों की learning पे या उसके पर कोई effect भी ना पड़े और उसका आगे further progression भी next classes के लिए भी चले. जो most important topics हैं जो आगे बच्चों को लेके जा सकते हैं, concept बच्चों के strong होने जरूरी होते हैं, उनको इन 4 months में cover up किया जाए. लेकिन not with this, इसके साथ साथ we are also working as a तालीम घर के अलावा भी e-learn program भी हमारा चल रहा है, plus ऑनलाइन हमने सारी टेक्स्ट बुक्स को डिजिटाइज भी कर दिया, जितनी भी टेक्स्ट बुक्स हैं वो भी डिजिटाइज हो गई हैं. नंबर 3 पे हमने इसके साथ साथ ई-लर्न के साथ तालीम घर के अलावा
We are also working to prepare the video lessons that would be available on YouTube, on net, on every channels. Even we will try to provide in CDs wherever we can. मतलब ये आगे implementation procedures तो PMIU या further school education है, but at our end we are making the video lessons कह लें, जहाँ पे भी e-learn के अलावा, तालीम घर के अलावा जो कमी बेशी रह जाती है उसको सारा sort out करने के बाद proper एक lesson wise video lessons would be prepared, animation कह लें या videos that would be prepared and that would be launched and that would be provided to the schools and teachers, मतलब जहाँ जहाँ पे requirement है उसको provide किया जाएगा. इसके अलावा बहुत सी मतलब thousands, इसके अलावा जो हमारे MD साहब है, मैनेजिंग डायरेक्टर राय मंसूर अहमद साहब, वो क्वारंटाइन में हैं इस वक्त, वो शायद वो ज्वाइन भी कर लेते, वो आप सबको बहुत बहुत सलाम भी कह रहे थे इस वक्त. ही इज आल्सो एडिशनल चार्ज ऑफ कायद आजम अकेडमी फॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग, ठीक है, उसके भी वो डीजी हैं. तो वो ऑनलाइन टीचर्स ट्रेनिंग भी हमने स्टार्ट की है कि ज़रा वो जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स ड्यूरिंग समर या में चल रही होती हैं वो भी नहीं हो पा रही, तो ऑनलाइन ट्रेनिंग्स का शेड्यूल वो भी उसके साथ चल रहा है. जो हम बात अभी कर रहे थे क्वालिटी एजुकेशन के रेफरेंस से, या मिस बेला ने जिक्र किया कि हाउ वी कैन गो फॉर टीचर्स ट्रेनिंग, या जो बच्चों के जो कुछ इश्यूज रह जाएंगे सारे कोविड-19 के रेफरेंस से, उसमें वी आर हैविंग द प्लान, या डीजी कायद हैविंग द प्लान, ऑनलाइन ट्रेनिंग टीचर्स ट्रेनिंग भी चल रही है. प्लस उसके साथ साथ हमारा जो फर्दर है अराउंड जो प्राइवेट सेक्टर की बुक्स हैं उनको भी कुछ अराउंड 10,000 जो बुक्स हैं डिफरेंट पब्लिशर्स के रेफरेंस से हमारे पास आई हुई हैं, जिसको हम रिव्यू भी कर रहे हैं फर्दर के जो उसमें हेटेड मटेरियल है, इंक्लूसिव एजुकेशन के रेफरेंस से, रिलीजन के रेफरेंस से, जेंडर के रेफरेंस से, उसको भी हम देख के कोई 30 कमेटीज उन सारी बुक्स को रिव्यू कर रही हैं ताकि, और प्रोएक्टिव एक्शन ले रही हैं इंस्टेड कि हमें मीडिया से कुछ ऐसी चीज़ों से वो सारे को कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं और इस रेफरेंस से. और होपफुली इंशाल्लाह कि उसके साथ साथ अगर फर्दर सिचुएशन बेहतर होती है तो ये APL जो लर्निंग प्रोग्राम इट विल गो हेड, अगर फर्दर उसमें करना पड़ता है तो अगेन वी विल गो फॉर मतलब फर्दर उसके साथ कह लें कि स्पोर्टिव मटेरियल को हम करेंगे जो टीचर्स के लिए और स्टूडेंट्स पेरेंट्स के लिए भी प्रिपेयर किया जाएगा. थैंक यू सर. नहीं, थैंक यू जी, आपने काफी कॉम्प्रिहेंसिव हमें स्टेप्स बता दिए जो काफी सारे लिए जा रहे हैं, जो इन टर्म्स ऑफ जो लेजिस्लेशंस पास हुई हैं और पब्लिक डिबेट में ज्यादा पार्टिसिपेशन नहीं हुई है. इसमें कोई प्लान्स है कि शायद फर्दर अमेंडमेंट्स या कोई ड्यू प्रोसेसेस या इंडिपेंडेंट गवर्नेंस बॉडीज रखी जाएंगी ताकि जो रिलीजन का रोल आ रहा है, जो एक्सटेंसिव हो रहा है, रैपिडली इंक्रीज कर रहा है, उसको थोड़ा सा कोई चेक में रख सके फॉर ऑल द रीजंस दैट हैव बीन डिस्कस्ड ऑन दिस वेबिनार एज एन एग्जांपल. उसमें कोई प्लान्स हैं? उसमें फर्दर डेफिनेटली प्लान है कि फर्दर उस पर डिस्कशंस की जाए या दोबारा से उसको असेंबली में क्वेश्चन रेज करके कुछ इस तरीके से कुछ करारदाद जिसको कहते हैं पास करवाई जाए ताकि उस पर प्रॉपर डिस्कशन हो जिसमें स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू लिया जाए, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से अपना उनके पॉइंट्स लिए जाएं और उसके बाद उसको लॉन्च किया जाए कि डिस्कशन तो एटलीस्ट होनी चाहिए ना. इट इज लाइक जस्ट दे हैव इम्पोज्ड द थिंग विदाउट द डिस्कशन, विदाउट मतलब वोटिंग. इवन द एजुकेशन मिनिस्टर इज नॉट सपोज्ड टू स्पीक a single word in this resolution, so it needs to be discussed and inshallah hopefully our MD and DG sab he would be the process. We are not agree with this resolution, you know, ke is level pe aake where we go for the inclusive education, we want our students they go for the 21st century skill, IT skills like that. So at this moment we should not bind them like in a conventional structure in the primitive और बल्कि जो माइनॉरिटीज भी जो हैं हमारे उन बच्चों की भी इंक्लूजन, और जो टीचर्स ज्यादातर जाके रिलीजन पढ़ा रहे हैं जो कि ट्रेन नहीं हुए हुए क्योंकि अपस्किल नहीं हुए हुए, उनको भी ऐसी क्वालिफिकेशन प्रोसेसेस हो इन प्लेस ताकि वो भी जब क्लासरूम में जाएं दे आर इक्विप्ड टू टीच द सब्जेक्ट फॉर द सब्जेक्ट इटसेल्फ. Thank you so much, Maimuna. I really appreciate your input. For the last 4 minutes, Dr. Nair, I'd like to come back to you. In section 1, you had mentioned कि जो single national curriculum है वो purpose नहीं serve कर पा रहा या कर पाएगा to develop an inclusive education system across levels, including higher education. So what do you think will? आप mute पे हैं, Dr. Nair. No problem. It's a very crucial point. पिछली बहस में भी मुझे याद आया एक हिस्टोरिकल फैक्ट, वो था
8 سے لے کر 2013 اور 2013 سے لے کے 2018 تک کی حکومتوں کے رویے. یہ کے پی کی بات ہے کہ 2008 سے 2013 تک کی جو حکومت تھی وہ ANP اور پیپلز پارٹی کی تھی. تو جب 10th امینڈمنٹ آئی تو انہوں نے فوراً اپنے بکس کو چینج، نئی کتابیں لے کر آئے سوشل اسٹڈیز کی، اور اس میں سے تمام ہیٹ میٹیریل نکال دیا اور اس کو زیادہ سے زیادہ انکلوسیو بنانے کی کوشش کی. اس کے بعد 2013 سے 2018 کے لیے ایک اور حکومت آئی، دوسری حکومت آئی، وہ PTI اور جماعت اسلامی کی تھی. انہوں نے واپس تمام ہیٹ میٹیریل کو ڈال دیا، واپس تمام ہسٹوریکل ڈسٹورشن کو ڈال دیا. تو یہ آپ کو تھوڑا سا بتاتا ہے کہ PTI کا جغرافیہ کیا ہے، وہ کہاں ہے، کس قسم کی چیزیں وہ فالو کرتی ہے. جو انہوں نے کہا ہے کہ وہ اپارٹھائڈ ختم کرنا چاہتے ہیں، بنیادی طور پہ یہ ہے کہ جی کچھ ہیں جن کو بڑے اچھے اپرچونیٹیز ہیں، کچھ ہیں جن کو نہیں ہیں. تو بھائی آپ کوالٹی آف ایجوکیشن بڑھائیں، زیادہ سے زیادہ لوگ جہاں پہ ہوتے ہیں وہاں کوالٹی آف ایجوکیشن بڑھائیں. کوالٹی آف ایجوکیشن کے واسطے اب دیکھیے انہوں نے جب یہ حکومت میں یہ آئے تھے 2018 میں، تو انہوں نے ایک ایجوکیشن پالیسی فریم ورک دیا تھا 2018 میں. اور اس فریم ورک میں انہوں نے 4 اپنے پرائرٹی ایریاز بتائے تھے. سب سے پہلا تھا کہ آؤٹ آف اسکول چلڈرن کو اسکولوں میں داخلہ دیں گے تاکہ سب کو ایجوکیشن مل سکے انڈر آرٹیکل 25A. دوسرا تھا یہ جس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں یونیفارم ایجوکیشن. اور تیسرا تھا کوالٹی، انہانسنگ کوالٹی آف ایجوکیشن. اور چوتھا تھا ٹیکنیکل ایجوکیشن کی طرف ایمفیسس. جتنے ان کے علاوہ جو یونیفارم کریکولم کے علاوہ جتنے تینوں اسٹیپ ہیں، ان تینوں اسٹیپ کے اندر بہت اسٹرانگ کمٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے گورنمنٹ کی، بہت ریسورسز لگانی پڑتی ہیں. ان میں سے کوئی بھی ایک ایسا اسٹیپ نہیں ہے جو بغیر ریسورسز کے حاصل ہو سکے، کوئی بھی نہیں ہے. صرف ایک تھا جو بغیر ریسورسز کے حاصل ہو سکتا تھا، اور وہ تھا یونیفارم کریکولم کا، جس کو انہوں نے لیا اور جس کو انہوں نے یہاں تک پہنچایا. اور اب اس وقت یہ صورتحال ہے کہ اس کے اوپر سارا زور ہے، باقی تمام چیزیں وہ بھول چکے ہیں. ان میں سے کوالٹی آف ایجوکیشن کو بڑھانے کی باتیں وہاں بہت ہوئیں، ابھی بھی بہت سے اسٹیپس ہیں جو استعمال کر کے کوالٹی بڑھا سکتے ہیں. یہ ان کے ایجنڈا پہ اب تک نہیں آیا، ہم انتظار کر رہے ہیں، سارے شہری انتظار کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ ایجوکیشن کی کوالٹی بڑھے، خاص طور پہ پبلک ایجوکیشن کی، تو وہ ایگزامینیشن سسٹم کو بہتر کریں. کیا وجہ ہے کہ آپ کے A اور O لیولز کی ایجوکیشن اچھی ہوتی ہے؟ اس وجہ سے کہ ان کے امتحان اچھے ہوتے ہیں. کیا وجہ ہے کہ آپ کے خراب ہوتے ہیں؟ کیونکہ آپ کے امتحان خراب ہوتے ہیں. آپ اپنے امتحانوں کو ٹھیک کریں گے، وہ ٹھیک ہو جائیں گے. یہ کون سی بڑی بات ہے کہ آپ امتحانوں کو ٹھیک نہیں کرتے. آپ یہ کریں کہ ٹیکسٹ بکس آپ کو جتنی بہترین سے بہترین دنیا سے مل سکتی ہیں وہ سب لا کے آپ یہاں پہ چلائیں. کیا ضروری ہے کہ یہاں کے آتھرس مل کے سب اسٹینڈرڈ ٹیکسٹ بکس لکھیں اور وہ بچوں کو لازماً پڑھنی پڑ جائے؟ کیا ضروری ہے کہ ایسا ہو؟ کیوں نہیں ہو سکتا کہ آپ دنیا جہاں سے بہترین کتابیں لا کے اپنے اسٹوڈنٹ کو پڑھائیں، آپ ان سے ان کے وہ پے کریں، رائلٹی پے کریں اور یہاں چھاپیں اور اسٹوڈنٹس کو اویلیبل کروائیں. آپ جو ہیں وہ لرننگ اسکلس جو ہوتی ہیں اسٹوڈنٹس کی، ان کے اوپر فوکس کیوں نہیں کرتے؟ جیسے بیلا نے بتایا کہ لینگویجز بہت بڑا پرابلم ہے. لینگویج اسکل سکھانا ایسا کون سا مسئلہ ہے کہ آپ لوگوں کو اکٹھا کر کے کہہ نہیں سکتے کہ پاکستانی بچے، سندھی بچے، پختون بچے، پنجابی بچے کس طریقے سے زبان کو اچھی طرح سیکھ سکتے ہیں، ان میں کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں، ان میں لکھ سکتے ہیں، ان میں بات کر سکتے ہیں، وہ کریں. آپ کیوں نہیں ان کی ریزننگ ٹھیک کر سکتے ہیں، میتھمیٹکس ٹھیک کر سکتے ہیں؟ آپ کے ایجوکیشن سسٹم کے اندر کہیں کیوں نہیں ہے وہ چیزیں جس سے کریٹیکل تھنکنگ بنتی ہے، جس سے کہ آپ کوئی سوال کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے اور سوال کرنے کے بعد پھر آپ ان کے جواب تلاش کرنے کی صلاحیت بھی پیدا ہوتی ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو بہت معمولی چیزیں ہیں. اگر آپ فوکس کریں اس کے اوپر تو جتنا آپ نے وقت لگایا ہے یہ یونیفارم کریکولم کو بنانے میں، شاید اتنا ہی وقت سے تھوڑا سا زیادہ وقت لگے گا، لیکن آپ کے یہاں ایسے لوگ موجود ہیں جو آپ کے پاس ایک پورا سسٹم بنا کے دے دیں گے کہ بھائی یہ لیجئے، اس سے آپ اپنی کوالٹی امپروو کر سکتے ہیں. پھر آپ کروائیے. یہ نہیں کریں گے تو آپ کبھی اپارٹھائڈ ختم نہیں کر سکتے. جو بچہ یہاں سرکاری اسکولوں میں جاتا ہے اور 10ویں جماعت تک پڑھ لیتا ہے، 12ویں جماعت تک بھی پڑھ لیتا ہے، وہ اتنا محروم ہے اسکلز سے
यूजफुल स्किल से कि वो किसी काम का नहीं है. काश वो ना पढ़ता, काश वो किसी वर्कशॉप में बैठ के उस्ताद के हाथों डंडे खा के वो सीख लेता तो वो ज्यादा कमाता बजाय इसके कि वो ये काम करे. और आपके पास ये जाने कि आपके पास मदरसे इतने क्यों चल रहे हैं कि मदरसे जो हैं वो बच्चों को बोर्डिंग लॉजिंग भी देते हैं, माँ बाप को उस मुसीबत से जान छुड़ा देते हैं, इस वजह से बच्चों को वहां भेज देते हैं कि जाओ जाके पढ़ो. ये सब वो चीजें हैं जो आपको कहती हैं कि आप अपनी यहाँ की नेशनल प्रायोरिटीज को ठीक करें. नेशनल प्रायोरिटीज को ठीक करें तो उसके बाद कहीं जाके आप ये ठीक कर सकेंगे, वरना ये चीजें ठीक नहीं होंगी. थैंक यू. Thank you, Dr. Nair. I think you've touched on a lot of the technical areas of curricular revision, as well as school level revision, as well as the evaluation and assessment of students, teachers, and extending on to schools. And that brings us nicely to a close to the 3 sections of the webinar itself. At this point, I want to extend a heartfelt gratitude to all of you for sharing your time, your insights, as well as engaging so well with one another. So thank you. With that, I'd like to turn to Kamila to conduct the Q&A session. We have over 41 questions right now. I'm sure we won't get through all of them, but Kamila, I'll turn over to you now to get through as many as we can, and then I'll just ask you to come back to me and I'll do a quick official close. Thank you. Thank you, Anya, and thank you to panelists for such an extraordinary session. I think that for myself and also from what we can see in the chat and the questions, people have really engaged and have sort of really debated it in a parallel. So that's been really interesting. As Anya said, we have a lot of questions. There is no possibility for me to cover all of them right now. I have, to the best of my ability, tried to bunch them and make them into clusters so that we can try and address as many as possible. Some of the things I have to say, and I say this more for the attendees, that those things have been covered already by the panelists. So if anybody is, I don't want anybody to feel that I ignored their question. But coming to some areas that perhaps were less covered, one of the questions that came in was, which I will address again to Ms. Maimoona. The question many people have asked is, who edits the Islamic and non-Islamic content of textbook materials? Who decides कि क्या include होगा कि क्या और क्या नहीं include होगा? इसमें ये है कि हमारे पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड में एक कमेटीज होती हैं डिफरेंट टाइप्स की, जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट और एक्सपर्ट्स, टीचर्स और जो करिकुलम डेवलपमेंट प्लस जो यूनिवर्सिटी या कॉलेज लेवल के एक्सपर्ट्स होते हैं, उनके ऊपर 6 to 7 पर्सन्स की कमेटी होती है जो टेक्स्ट बुक्स को रिव्यू करती हैं, एज वेल एज कुछ कमेटीज होती है जो करिकुलम को भी रिव्यू करती हैं. आपका क्वेश्चन दैट इज आई थिंक रिलेटेड टू द टेक्स्ट बुक्स. तो टेक्स्ट बुक्स का जब आता है उसकी जब जो भी ऐसी समटाइम ये आता है प्रॉब्लम, या उसको फर्दर एक तो हमारा सेक्शन 10 के तहत हमारा पीसीटीबी एक्ट 2015 का सेक्शन 10 है, जिसके तहत जो भी कुछ उसके टीओआर्स हैं, जिसमें ये है कि आपकी आइडियोलॉजी के अगेंस्ट जो चीज़ होगी, रिलीजन के अगेंस्ट चीज़ जो होगी, जो हेटेड मटेरियल होगा, इस तरह की या वैल्यूज के अगेंस्ट जो भी चीज़ जाएगी, दैट वुड बी रिव्यूड बाय दैट कमेटी. उस कमेटी के रेफरेंस से अगर तो वो सेक्शन 10 के प्रीव्यू में आ रही है, पीसीटीबी के प्रीव्यू में डेफिनेटली आ रही होगी, तो उसको बैन कर दिया जाएगा और फर्दर नेसेसरी एक्शन उस पर लिया जाता है. इसी रेफरेंस से जो ऑलरेडी आई डिस्कस्ड के हमारे इस वक्त पीसीटीबी में अराउंड 10,000 बुक्स जो हैं डिफरेंट पब्लिशर्स की, जो डिफरेंट प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाई जा रही हैं डिफरेंट लेवल्स पे, जो जिसमें एलाइट स्कूल्स भी शामिल हैं, दूसरे जो छोटे छोटे स्कूल्स होते हैं वो भी शामिल हैं, उनकी अराउंड 10,000 बुक्स हैं हमारे पास, और कोई 30 कमेटी डिफरेंट सब्जेक्ट्स की हैं जो उसको इस वक्त रिव्यू कर रही हैं. और उसमें प्रोएक्टिव अप्रोच हम लोग इस वक्त ले रहे हैं कि जो भी ऐसा मटेरियल है इस्लाम से रिलेटेड है, रिलीजियस से, आइडियोलॉजी से रिलेटेड है, कुछ भी ऐसा जेंडर वाइज है, तो उसको हम फौरन इमीडिएटली बैन कर सकते हैं एज पर सेक्शन 10 ऑफ पीसीटीबी. Okay. The next question is to Justice Nasra, and that is regarding this policy, and it's a very pointed question. How can this policy be challenged in court? Kamila, she's gone off the phone, so I'll call her back. Did you want to position the next question to her? Okay, sure. No problem. Okay, then the next question I will address to Bela. Bela, there's a question from several, and also Bela, you're on mute. There is from several people asking,
are primary teachers in the either even at elite schools or at lower cost schools, are they qualified and trained enough to teach religious content and to interpret religious content? नहीं, not at all, in the sense कि वो ऐसा मफरूज़ा है कि जो हमारी टीचर्स हैं उनको तो आता ही है कुरान पढ़ाना या इस्लामियात पढ़ाना, और अभी जो सिंगल नेशनल करिकुलम है उसमें आप ये सोच सकती हैं, क्योंकि ये उसमें ये वाज़ेह है कि 30 सिपारे जो हैं वो पहली से 5वीं तक पढ़े जाएंगे, उसके अलावा बहुत कुछ और भी है ना। अगर इसको बहुत अच्छी तरह से करवाना हो तो एक तो टाइम चाहिए है, और टीचर्स को बाकी सब सब्जेक्ट्स भी पढ़ाने और ये भी पढ़ाने, इसको कोई एक ठिकाने से करने के लिए तो बहुत ट्रेनिंग की ज़रूरत है। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या नए टीचर्स रिक्रूट किए जाएंगे, कि एक सवाल बहुत अहम है कि क्या प्राइमरी स्कूलों और जिस तरह से सोच है, जिस तरह से इसके SLOs दिए गए हैं या ड्राफ्ट हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि इश्तिहार जा चुके हैं नए सिंगल नेशनल करिकुलम के, तो ऑल्दो करिकुलम शायद पूरा अप्रूव नहीं हुआ, यहाँ तक नहीं पहुँचा, पर कुछ रिव्यूज तो हम लोग सब शामिल रहे हैं। तो नो टीचर्स आर नॉट ट्रेन्ड, so the question is, will they take some other teachers or some other cadre of teachers for even the primary schools? That's a question, because if you look at the B.Ed courses, I don't see that covering this particular as of now. तो अगर करना होगा तो क्या crash courses देंगे teachers को, induct करेंगे नए teachers को? These are all questions up in the air. और क्या वो 30 मिनट का पीरियड होता है वो काफी होता है सबको करने के लिए? तो ये सब issues हैं which obviously there's a lot of thinking. Okay, thank you. Just a quick intervention on that. जी डॉक्टर। ऐसे टीचर्स कहाँ से मिलेंगे? बहुत आसानी से आपको मिल जाएंगे, मदरसे भरे हुए, मदरसों से वो लेकर आएंगे और वो फिर स्कूल का माहौल ऐसा तबाह करेंगे, उधर दाढ़ियां होंगी, उधर टखनों से ऊपर शलवारें होंगी, उधर तो पामाल हो जाएगा पूरा माहौल। मैं भी इसमें इजाफा करूं कि अभी जो नेशनल नया करिकुलम बनाया गया है, सिंगल नेशनल करिकुलम, इसमें रिकमेंडेड यही है, जब इन्होंने बहुत ज़्यादा मवाद बढ़ा दिया है मजहबी, तो रिकमेंडेड यही है कि हर स्कूल में कम से कम 2 लोग मदरसा के ग्रेजुएट्स लिए जाएं, एक हाफिज और एक कारी, उनको मुलाजमत दी जाए। मैंने हिसाब लगाया कि अगर ऐसा हुआ तो इस वक्त 6000 मदरसा ग्रेजुएट्स को जॉब मिल जाएगी सरकारी खर्चे के ऊपर। Actually, इस क्वेश्चन से brings me to the next question जो काफी attendees ने पूछा है, and ये मैं पूरे पैनल को ओपन करूंगी because I know that several of you are very well acquainted with the unified curriculum. कि ये जो unified curriculum जो propose किया जा रहा है, ये public के साथ share होगा या फिर impose होगा जब government ने decide किया? तो I leave it open to whoever would like to answer. Perhaps Professor Memuna, you would like to start? Yes, actually, जो curriculum है, single national curriculum that has been approved, notified as well. अभी तो उसका ad भी आ चुका है textbooks की development के reference से. मार्च में उसका ad आ चुका है कि textbook development के लिए उसमें वो सारा process चल रहा है. It means कि that is approved. अभी share हो रहा है public के साथ या नहीं, ये that is the question in there, like, but otherwise it's approved and notified. It has not even been present in the parliament. इसको पार्लियामेंट में भी पेश नहीं किया गया, पार्लियामेंट में भी नहीं हुई है इसके ऊपर। हाँ, एक्चुअली आप बताएंगे जी मैं इस पे ये जो फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने करिकुलम अप्रूव किया है वो 1ली से 5वीं जमात तक का है, और वो बाकी जो है वो इन प्रोसेस है। और जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान भी किया कि अगले साल मार्च तक सारा करिकुलम जो है वो सिंगल नेशनल करिकुलम हो जाएगा, तो 1ली से 5वीं तक का जो है वो एक तरह से तैयार किया गया है। जो इंटरनली हमारी
यूं कहने की जिद्दोजहद है वो ये है कि जो नेशनल करिकुलम काउंसिल है उसने ये अब नहीं की, बावजूद ये कि कुछ अफसरान ये तस्वुर कर फर्ज करना चाहते हैं, मफरूज़ा उनका यह है कि वो नेशनल काउंसिल ने अप्रूव किया, वो नेशनल काउंसिल ने अप्रूव नहीं किया उस तरह से, बट वो इस तरह से समझना चाहते हैं। और यही चीज़ जो है वो मिनिस्टर साहब से उठाने वाली है और हमने कम्युनिकेशन की है और भी कम्युनिकेशन चाहिए उनको बताने के लिए कि इसमें जो इसको इम्प्रूव किया जा सकता है। अब इस स्टेज पे तो इम्प्रूव किया जा सकता है। वर्किंग ग्रुप ने 5 सब्जेक्ट्स पे, जैसे मैंने गुजारिश की, 5 जो मज़ामीन हैं पहली से 5वीं जमात तक, उनका एक रिव्यू लिख के दिया है और उसकी टेक्निकल साइड भी। तो मैं ये समझता हूँ कि अभी ये हो सकता है और इसको इस पे जिस फोरम पे भी बात हो सके, जहाँ भी बात हो सके, इस पे करनी चाहिए और मिनिस्ट्री को बताना चाहिए कि इसको इम्प्रूव करें। आनिया, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। आनिया, जी नहीं, उस पे मेरी गुफ्तगू हो रही है। बल्कि बीच में जावेद अब्बास का फोन भी आया था जो मैंने रिसीव नहीं किया, क्योंकि वो यही बताने के लिए, क्योंकि मैं इन लोगों से जबान के सिलसिले में मैं बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हूँ कि बिल्कुल शुरू से अंग्रेजी सिखाई जाए। और शुरू में तो इन्होंने जो इलाकाई जबानों को तो बिल्कुल ही नजरअंदाज कर दिया था, हालांकि उनका कहना था कि नहीं वो कागज गिर गया था, हम अनाउंस नहीं कर सके थे। बहरहाल बाद में डाला, लेकिन अभी मुझको जो आखिरी इत्तला मिली थी, उन्होंने ये कहा था कि एक नेशनल कॉन्फ्रेंस होने वाली थी जिसमें जबान के उस पर बात होगी, तो वो होने वाली थी 18 मार्च को। तो वो लॉकडाउन हो गया 2 दिन पहले। जिन साहब ने मुझे फोन करके कहा कि वो कॉन्फ्रेंस नहीं हो रही है, वो तो बहुत खुश थे इस बात पे, क्योंकि मेरे ख्याल में वो कॉन्फ्रेंस से भी घबरा रहे थे। बहरहाल अब पता नहीं, वो मुझको ये इत्तला दी गई थी कि ये करिकुलम तो तैयार हो गया है, लेकिन जबान के हवाले से अभी एक वेबिनार करेंगे और उस पर फैसला करेंगे। ये मुझे अभी तक पता है। Thank you Zubaydah, that's really useful information. बहुत शुक्रिया। मैं जस्टिस नासिर के पास वापस जाती हूँ उसी वक्त दोबारा से वो क्वेश्चन पूछने कि ये जो पॉलिसी इम्पोज की गई है इसको कोर्ट में किस तरह कंटेस्ट किया जा सकता है। मैं सुन रही थी बात तो मुझे ये बहुत अजीब लगी। देखिए ना, वी आर अ फेडरल सिस्टम, सारी हमारा मुल्क ही ऐसे हमारी एजुकेशन है, ये तो है ही प्रोविंशियल सब्जेक्ट। तो यहाँ पे यूनिफाइड नेशनल पॉलिसी को इम्पोज करना मैं समझती हूँ बहुत ज्यादा है, क्योंकि हर जो इलाका है उनकी अपनी कल्चरल, एथनिक, लिंग्विस्टिक हर लिहाज से तरीके फर्क है। तो मैं समझती हूँ कि जैसे अभी आपने कहा, एक तो लोगों को पता ही एनीथिंग व्हिच इज टू बी पुट इनटू द पब्लिक रेल्म मस्ट बी फर्स्ट ऑफ ऑल एडवर्टाइज्ड। मैस मीडिया इतने हैं, आप बताएं कि आप करने को जा क्या रहे हैं, अखबार छपते हैं उसमें आप बताएं कि आप करने को जा रहे हैं। और मैं समझती हूँ कि हर सूबे का अपना इख्तियार होना चाहिए कि वो करिकुलम किस तरीके से बनाए। ठीक है, एक नेशनल पॉलिसी को आप उसके बाद कर सकते हैं इकट्ठा, ताकि उसमें इतनी ज्यादा नहीं हो डिसइंटीग्रेशन के sort of fall apart, but basically we must respect the diversity of our federal system. बस मैं तो इतना ही कहना चाहती हूँ। थैंक यू जी। मेरा नेक्स्ट सवाल है डॉक्टर फरीद के लिए। डॉक्टर फरीद, आपके लिए एक स्पेसिफिक क्वेश्चन आया है which says that the concept of state and religion and where secularism versus a sort of a theocratic, well I am interpreting it as a theocratic state, but let's say if the state is biased towards religion, so how does this system जिससे आपने बात किया था about how students learn, तो ये एक इस the concept of state है, how does it fit into that? I think thank you, the idea and the practice of state becomes very important, वो बहुत central है इसके लिए। So दो चीजें, first I think this word secular itself perhaps needs a whole session to be discussed। वो बहुत I think distorted way में समझा जाता है हमारे context में। Secular, secularity, secularism, post-secular, these are the ideas that perhaps require their own session to debate.
the key point is really not what we call these things and what we call the state. The key point is that the state should see itself as equally responsible for the well-being of each and every citizen. That's the contract between the state and the citizen that happens. And if the state looks after the well-being of each and every citizen, that means that citizen's religion, that citizen's cultural practices, that citizen's opportunities in life, they also become the purview of safeguarding by the state. And that then becomes the basis on which a religious education reflects that it safeguards the right of each citizen to have access to his or her tradition in the way he or she wants or the family wants. So that's the background idea. I think at the moment it's very far away from what we have, but that's the way we should be hoping to meet. I think the contract between state and citizen, and the state to see each citizen as equally important in its eyes and equally worthy of well-being and flourishing life, is, I think, really key that makes the difference between the states and countries that have done well for their citizens and those that have not done for their citizens. Thank you, Dr. Farid. I know we're running way over time, but we are going to go over for about another 5 or 10 minutes, I think, Anya. That's what we decided. I think so. I'll try and make this the last question, but it is a larger clustered question, and I will start with addressing this to Dr. Riaz. The question has been posed in different forms by different attendees, and one of the questions was, why is it that Muslim students are taught Islam and non-Muslim students are taught ethics? Shouldn't ethics be taught to all the students? But मैं इस question को थोड़ा सा बढ़ा के कहूँगी कि the role of ethics in our education, इसमें भी अगर आप comment कर सकें, because I think ये एक मौजू है जो हमारे religious narrative में डूब जाता है. So Dr. Riaz, this is to you first, please. It's an absolutely right thing. Ultimately, when you talk about the ethics, means we want to make people who are tolerant, people who understand social circumstances and something else. आपने बात की कि जी हमें ethics तो पूरी society को पढ़ाने की जरूरत है, and ethics is not only for school learning, ethics is for media as well and for the larger society. आप medical sciences के students को पढ़ाते हैं इस्लामियात और पाकिस्तान studies, those who are doing their MBBS and FCPS. Does it make any sense? You have to teach them the subject of humanity. And ultimately, वो जब हम बात करते हैं कि जी we want to segregate society into 2 different compartments. One is the Muslim and other is the non-Muslim. So when you think that Islamiyat is for them, what other options you have for them? तो बड़ा आसानी से जी ethics will be taught to them. But problem is that ethics is a larger subject which has to be taught to each and every citizen of this country. And Islamiyat is, as the Parvez was saying, it is only for those people who are going to go in the religious studies. इसको enlarge करना मेरे ख्याल में ultimately it's a contradiction in society we are feeling. Thank you. Professor Nair, would you like to expand that also on that? In terms of ethics teaching for Muslims and for Muslims as well? You're on mute. Is that to me? Ji. Sorry. No, I think I fully agree with Riaz. He has given a very good answer to this question. Ethics, generally speaking, तमाम करिकुलम का एक हिस्सा होना चाहिए, हर एक के लिए होना चाहिए और ग्रेडेड अंदाज में होना चाहिए हर जगह. रिलीजन की स्टडीज के वास्ते ये है कि अगर किसी जगह के ऊपर किसी एक पर्टिकुलर फेज के बहुत से स्टूडेंट्स हों, उनके पास भी पूरी तरह उनका भी हक बनता है कि उनको उनके रिलीजन की स्टडीज अगर उनकी एक ही करवाई जाए. अगर इस किस्म के बंदोबस्त हम कर सकते हैं फिर तो ये ठीक है, वरना एक आम तासुर जो ये लिया जाता है, मेरे ख्याल में ये जहन में रखना चाहिए, ख़ास तौर पे उन मज़ाहिब में जहाँ पे इंटरनल डिविजन्स बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ पे ये है कि रिलीजन जो है वो एक डिविसिव फोर्स बन जाता है. इसका मतलब ये हुआ कि जब आप उसको पढ़ाना शुरू करते हैं तो एक ऐसा लेवल आता है कि जिस पे जाने के बाद
آپ کے پاس اس کے اندر اختلافات بہت سیریس ہو جاتے ہیں. ہمارے پاکستان میں بھی یہ ہو چکا ہے کہ جب ہم نے یہاں پہ اسکولوں میں ریلیجن پڑھایا تو اسلامیات کے اوپر ہمارے پاس ایک ملک کے اندر بڑا ایک شہر کے اندر بڑا فساد ہو گیا اس بات پہ. وہ کہنے لگے کہ یہ تو وہ اسلام نہیں ہے جو ہم سمجھتے ہیں. یہ چیز خاص طور پہ بتاتی ہے کہ مذہب کو پڑھانا اس لحاظ سے خراب ہے کہ وہ ڈویسو ہوتا ہے. اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ مذہب کی تعلیم جو ہے والدین کے اوپر خاندانوں پہ چھوڑ دینی چاہیے کہ وہ پڑھائیں. لیکن اگر پڑھانی ہے تو پھر زیادہ اچھا یہ ہے کہ اس کو کمپیریٹیو ریلیجن کے نام پر پڑھایا جائے, یا بہت ایسنس کر کے بہت چھوٹے سے ایک انداز میں کہ اتنی زیادہ تفصیل کے ساتھ اگر مذہب کی تعلیم ہوگی تو ڈیٹیل میں جانے کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کنٹروورشل ایشوز میں چلے جاتے ہیں. سوچنا چاہیے. Dr. Fareed, you wanted to add something? Yes, just quickly that even when we talk about teaching ethics, it can mean different things. Because teaching ethics could simply mean imposing a code of ethics to say this is do's and don'ts and rights. I think teaching ethics should actually mean, in my view, development of the capacity of moral reasoning, so that the child is able to think through different options and different choices that are there and the consequences of those actions on others with a sense of empathy and care. So I think it is ethics also not simply a list of do's and don'ts and duties, but a process of ethical thinking, ability to consider others as end in themselves and not just means. I think that's not an easy process. And if we want that, which is very, very highly valuable, that's the way to do it, and not simply a list of do's and don'ts. Thank you, Dr. I think یہ بھی کہہ دیں کہ بہت سارے غیر مسلم بچے بیچارے اسلامیات پڑھ رہے ہیں کیونکہ اسکولوں میں ان کے لیے ہے نہیں. اب ایک اسکول میں 2 بچے ہیں جو عیسائی ہیں, تو کہتے ہیں ہم کیا پڑھیں. انہوں نے کہا ہم ایتھکس کا ٹیچر نہیں لگا سکتے, تو وہ اسلامیات پڑھنے لگتے. یہ تو سب سے بڑا انسانی حقوق ان کے خلاف ہوتا ہے. جس سے آپ جی بالکل بالکل. جی ڈاکٹر وڈ بوائے, پروفیسر وڈ بوائے, آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ I listened to what Dr. Panjwani was saying, and yes, of course, it's difficult, but it's made much more difficult by the fact that it doesn't belong to our culture. Learning to think with your own mind has always been considered dangerous, and the concept of conscience is a very foreign one. True, it has a translation in Urdu, Zamir. But tell me, how often do you hear the word Zamir? Aapka Zamir kya kehta hai? How often do you hear that? No, it is said that to do what is right is what was done in the past, and there'll be some suitable hadith for that or some suitable verse for the Quran. But the exercise of Zamir is not within our tradition. It's not within our culture. And so when people talk about critical thinking, be aware that that is so utterly subversive. It would undermine the very foundations of the state. So that's why it's not made any progress. That's why we can keep talking about it, but critical thinking does not belong to our culture. Give me, if I'm wrong, give me an instance of history when that was actually encouraged, when that was a part of any Islamic curriculum. I'm willing to take back my words if you can give me examples from any country in the world. Until then, we can talk about what we want. But look, let's be very clear. There is only one way for a state to be modern, for a people to be modern, and that is to change with the times and to make religion a personal affair. If you make it an affair of the state, if you impose it through your educational system, you're going to be talking about these things 100 years later in exactly these same terms. Just as science has frozen in Islamic civilization for now 800 years, so too has education. And so we have to move beyond that. Thank you, Professor, for your comments and for that incredibly nice but
binaries of thinking. I think, Anya, we have a lot of more interesting questions, but I think that we have run very, very over time. So I'm apologizing to all the questioners that I have not been able to attend to, and hopefully we'll be able to get them to the panelists and get them some responses at a later time. I leave it with you. Thank you very much for answering all the questions to all the panelists. Thank you, Kamila. That was an exceptional curation of questions, and thank you for bunching them together by theme. I have put in 3 email addresses in the chat. For anyone who has follow-up questions and is keen to get a response, we'll endeavor to get them responded to. And with that, I want to just extend another heartfelt thank you for joining us today and to this panel. I mean, it's been an absolute privilege to be in conversation with you. I am certainly walking away with a lot of questions and readings, and I will probably be spending the next several hours reading up on more of each of your works that is published and widely available. Thank you very much. Also for being courageous to highlight such an issue and to be able to be very authentic in pointing out the gaps that we have. I think that in order for us to make that progress, we have to be very realistic with the areas that we need to be focusing on. And we need to be very authentic with ourselves as well as our masses. With that, I'll bring the webinar to a close. Please note that the recording will be shared by ITA with everyone. And again, thank you so much. Please stay safe, wash your hands, stay home if you can, and thank you for joining us.